So the thing is, okay, I have to go back to the very part of the passage for the smaller picture questions which are in all the three flavors. That is the flavor which is जो आरसी का वो वाला passages जो कि factual होते हैं, no opinions. उसके बाद you will have passages which are facts उसमें हैं definitely, लेकिन उसके बाद उनमें opinions भी हैं, but no opinion of author. And the third flavor is कि facts भी हैं, opinions भी हैं जो कि other than authors हैं, लेकिन author का opinion भी है. Okay, so for all the three flavors, I will have the smaller picture questions, and the smaller picture questions operate in a way कि वो मुझे किसी specific location of the passage में भेजते हैं. और which part of the passage I have to go back to, वो मुझे बेसिकली स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मैंने पहले रीड दी थी स्ट्रक्चर के लिए, तो मुझे पता चल जाता है कि ये वाला जो क्वेश्चन इसको मैंने क्लोजली रीड किया, स्मॉलर पिक्चर क्वेश्चंस को भी मैंने बहुत क्लोजली रीड करना होता है. उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि मैंने इस पार्ट ऑफ द पैसेज में जाना है. देन अगेन इट इज ऑल वेरी क्लोजली अगेन, यू रीड इट वेरी क्लोजली, और फिर जो क्वेश्चन था इसका मैं आंसर देता हूँ कि अगर वो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन तो फिर मैं इन्फ्रेंसेस को बेसिकली ड्रॉ करता हूँ, मुझे पता होना चाहिए ऑपरेट करती है. ओके, अब सिचुएशन ये है कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो आपकी इस स्किल को रीडिंग समथिंग वेरी क्लोजली, वो उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रेंथन करती है. ओके Okay. you have 14 questions reading comprehension के, उसके बाद you will have 14 questions sentence correction की जो हम लोगों ने थोड़ी सी देखी थी. You will have just 8 questions critical reasoning के. They are not much questions, but they somehow strengthen the skill for the smaller picture RC questions. Okay. Yeah, I get that. Okay. अब situation ये है कि अब situation basically ये होती है कि जो कि जिस the part of the passage in which I have to go back for the reading comprehension. Okay. So reading comprehension मुझे किसी part of the passage में भेज देगा. That part of the passage मुझे पता है कि जो passage था वो 3 flavors में था. Passage जो था वो 3 flavor में था. First flavor था और second flavor था और third flavor था. Okay. जो first flavor था उसमें facts थे, no opinions. जो second flavor था उसमें facts भी थे और फिर opinions भी थे. Opinions जो थे वो, अब ये वाली जो सिचुएशन होती है कि फैक्ट प्लस ओपिनियन, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट. ओके, अब यू विल एनकाउंटर और यू मस्ट हैव रिमेंबर कि एससीटीज में भी ये होता था कि इकोनॉमिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्ग्यू, ओके, दे क्लेम, दे पॉजिट. ओके, इस तरह के वर्ड्स होते थे जो एससीटीज की भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती थी आपकी कोई भी. बट आई वांट टू से कि जब ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉजिट, इनका मतलब होता है कि ये उनकी पोजीशन है. इसका मतलब ये होता है कि जो उनका ओपिनियन है, और जो ओपिनियन है वो किसी फैक्ट की बेस पे उन्होंने लिया होता है, और ये जो सारी चीज होती है ये आर्गुमेंट बन जाती है. दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड आर्गुमेंट. आर्गुमेंट अगेन, जिस तरह हम लोगों की इन्फ्रेंसेस जो रियल लाइफ इन्फ्रेंसेस होती है, जैसे मैं समझता हूँ कि इन्फ्रेंसेस रियल लाइफ में कैसे ऑपरेट करती है, जीमैट में बहुत सिंपल वे में ऑपरेट करती है. ओके, इस तरह जो आर्गुमेंट है, जो कि जब मैं वर्ड यूज करता हूँ आर्गुमेंट का, वो नॉर्मल लाइफ मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जो जीमैट है जो भी हम लोग जिसे प्रिपेयर करें उसमें इसका मतलब थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है. जिस तरह इन्फ्रेंसेस रियल लाइफ में कुछ और मतलब होता है, लेकिन जब मैं जीमैट में आता हूँ तो वो मस्ट बी ट्रू इन्फ्रेंसेस होते हैं. इसी तरीके से जो आर्गुमेंट होते हैं उनका एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उनका बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है जीमैट में, और वो मीनिंग होता है कि ओपिनियन प्लस फैक्ट, फैक्ट प्लस ओपिनियन इज इक्वल टू आर्गुमेंट. what I wanted to say कि that part of the passage जिसमें मुझे reading comprehension का जो क्वेश्चन है वो भेज रहा है, वो बेसिकली वो फैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो फैक्ट्स पे भी मुझे भेज सकता है, वो मुझे किसी आर्ग्यूमेंट पे भी भेज सकता है. दैट इज कि वो आर्ग्यूमेंट बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, अगर इट इज एन आर्ग्यूमेंट बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो उसमें फैक्ट्स भी थे, उसमें ओपिनियंस भी थे. ओके, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं जिस चीज को अब एनालाइज कर रहा हूँ, गोइंग बैक टू द पैसेज, इट कैन बी द फैक्ट्स or it can be the argument. Okay, it can be the facts or it can be the argument. Reading comprehension का passage में we can have the facts. अब जिस अगर मुझे facts में भेजे, it is also possible कि वो वाला passage जो कि flavor 2 का passage है जिसमें opinions भी हैं, multiple players के opinions हैं, उसमें जो facts हैं तो एक जगह ऐसी भी है कि वो मुझे specifically facts में भेज रहे हैं, लेकिन उस part of the passage में there is no opinion by any player. So what I wanted to say कि how to analyze the facts and how to analyze the arguments is also a very important skill for the GMAT. Let me repeat it again and let me connect the dots. Let me Okay. okay. Any writer,
any write-up or any communication is made up of actually two things. One is the facts are uttered, or the other thing is कि जो facts होंगे plus opinions are also uttered. Okay. When you have this, these are broadly speaking two things. अब इसमें जो कि आपके जो ये दो चीजें इसी तरीके से जो भी वर्बल आपकी जीमैट में होती है, और वर्बल में भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग, ओके, नॉट द सेंटेंस सिलेक्शन, उसमें भी हमारे पास फैक्ट्स होंगे या फिर मेरे पास फैक्ट्स प्लस ओपिनियन होंगे। जो सेंटेंस करेक्शन होती है ना, इट इज ऑलवेज फैक्चुअल, वो हमेशा फैक्ट्स होते हैं, उसमें ओपिनियंस नहीं होंगे। तो व्हाट आई वांट टू से कि इन अगर हमें हमारी एंटायर वर्बल जो जीमैट की है, इफ इट इज मेड अप ऑफ सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे फैक्ट्स को एनालाइज कैसा करना है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटेंस सिलेक्शन आर टोटली फैक्ट्स, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रिटिकल रीजनिंग जो जिन राइटर्स भेजते हैं वो फैक्ट्स भी होते हैं, और फैक्चुअल फैक्ट प्लस ओपिनियंस यानी कि आर्गुमेंट्स भी होते हैं। वो इट मींस कि मुझे फैक्ट्स को एनालाइज करना भी आना चाहिए, फैक्ट्स को क्लोजली रीड करना भी आना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि मुझे आर्गुमेंट्स है उनको क्लोजली रीड करना भी आना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से कि क्लोज रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीमैट। क्लोज रीडिंग जो होती है, अगेन अब किसको देनी होती है, यू हैव टू डू द क्लोज रीडिंग एट अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। यू हैव टू गिव द क्लोज रीडिंग फॉर द मैथ्स के क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। यू हैव टू गिव द क्लोज रीडिंग टू यू हैव टू गिव द क्लोज रीडिंग टू के क्वेश्चन है, उनको भी उनको क्लोज रीडिंग मैंने कब देनी होती है, मैंने आरसी में देनी होती है, लेकिन आरसी का जो मेरा इनिशियल रीड थ्रू होता है, मुझे वहां पे क्लोज रीडिंग नहीं देनी, और बाकी उसको छोड़ के हर जगह पे मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे क्लोज रीडिंग देनी होती है। इसी तरीके से जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है वो एंटायरली क्लोज रीड होती है, और जो सेंटेंस करेक्शन होती है वो एंटायरली टेक्सटिंग वेरी क्लोजली विद द टेक्स्ट, वो भी रीड होती है। यू हैव टू गेट यस फॉर द सेंटेंस करेक्शन भी मुझे उसका भी हम लोग देखेंगे किस तरह करना होता है, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत क्लोज रीड करना होता है। सो क्लोजली रीडिंग वेरी क्लोजली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीमैट, is a very important component of GMAT. In fact, यहाँ पे एक और क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेटेड रीजनिंग, जो सेपरेटली बेसिकली टू 8 मार्क होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं, दे आर सेपरेटली मार्क। उनके लिए भी बेसिकली उनके लिए भी मुझे क्लोजली रीड देनी होती है, बहुत क्लोजली रीड देनी होती है। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू से, क्लोजली रीड देना इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल फॉर जीमैट, फॉर रीडिंग, GMAT. और या फॉर 80% ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जस्ट जो मुझे इनिशियल रीड थ्रू होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो क्लोज रीड नहीं होती, वो क्लोज रीड नहीं होती। इसका रीजन ये होता है कि व्हेन आई एम रीडिंग क्लोजली, somehow I'm analyzing deeply. When I am analyzing deeply, I'm not in rush. I am analyzing deeply. I have slowed down and penetrated really, जो कि उसमें मैं अच्छे तरीके से उसको मैं I'm working very closely. I'm working hand in hand with the text. I'm working very closely with the text. Okay. So there comes the time when you have to work very closely with the text. Most of the GMAT is in fact made up of reading very closely with the text. But reading very closely with the text can take time. Okay, it takes time. अब reading comprehension में you have two types of passages: long passages and short passages. For the short passages question, you normally have passages, three questions are attached. For the short passage RC question, there are normally two paragraphs long. अब three, if you have one broad picture question, that means कि two जो है वो smaller picture questions होते हैं. If you have two smaller picture questions, it means from not everything inside the reading comprehension passage you had the smaller picture question. Not from everything inside the passage you had a smaller picture question. What I mean to say कि इसका मतलब ये है कि from a lot of detail no question was asked. और इसलिए मुझे जो इनिशियल रीड थ्रू होती है वो मैं स्ट्रक्चर के लिए देता हूँ, उसको मैं स्किमिंग कर देता हूँ, क्योंकि इट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द पैसेज जो कि फैक्ट है या फिर ओपिनियन था, नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड। इफ आई गिव इट अ वेरी क्लोज रीड नाउ, तो फिर मुझे उसका फायदा ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, यू अंडरस्टैंड कि स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, और वो चीज होती है यहाँ कि यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। जो इनिशियल रीड थ्रू होता है, आई रीड इट फॉर द मेन पॉइंट, फॉर द स्ट्रक्चर, और क्योंकि इट इज पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ डिटेल फ्रॉम द आरसी पैसेज, देयर वाज नो क्वेश्चन एसोसिएटेड,
स्मॉलर पिक्चर क्वेश्चन जो थे वो एक इस जगह से अगर इस जगह से थे, तो फिर जब अब मसला ये होता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को बिफोर हैंड नहीं देख सकते कि कौन कौन से क्वेश्चन है। एज यू गो तो फिर मुझे क्वेश्चन का पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन। तो मेरा ये होता है कि मुझे ऑफकोर्स स्मॉलर पिक्चर क्वेश्चन के लिए वापस आना ही है, तो मैं उस वक्त आके इसको एनालाइज कर लूंगा। ओके, और जब मैं इसको आके एनालाइज करूंगा, यहाँ पे वी कैन हैव टू थिंग्स। इट कैन बी दैट पार्ट ऑफ द पैसेज जहां पे मुझे वापस क्वेश्चन ने भेजा है, इट कैन बी फैक्ट्स or it can be an argument. It can be an argument, okay? Or Flavor it can be any of them. फ्लेवर टू और जो फ्लेवर थ्री था, फ्लेवर टू एंड फ्लेवर थ्री देवर आर्ग्यूमेंट्स। फ्लेवर वन जो था वो जस्ट फैक्ट्स था, ओके। लेकिन जो फ्लेवर वन ऑफ आरसी पैसेज था उसमें जो सारा ही फैक्ट था, लेकिन जो फ्लेवर टू और फ्लेवर थ्री के जो आरसी पैसेजेस थे उनमें बेसिकली वो वाले भी तो पैचेस थे जो कि सिर्फ फैक्ट्स थे। तो इसका मतलब है कि मुझे फैक्ट्स को एनालाइज करना भी आना चाहिए, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये फैक्ट्स हैं और ये जो है ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। यानी कि मुझे फैक्ट्स को सेपरेट करना आर्गुमेंट्स आने चाहिए। इसका मतलब ये कि इनफैक्ट आर्गुमेंट भी जो होते हैं वो फैक्ट्स और ओपिनियन से बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे ओपिनियंस को फैक्ट्स से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मुझे फैक्ट्स को ओपिनियन से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ओके, मेकिंग सेंस? Yeah, Okay, so you just give me a second. Let me grab water. We'll have 30 seconds breather. sure. ओके, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, ये ब्रॉडर पिक्चर क्या है? ओके, सबसे जो लीथल सिचुएशन होती है ना वो ये होती है कि द मोस्ट लीथल सिचुएशन इज द सिचुएशन जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो और आप क्यों कर रहे हो। ओके, जहाँ पे यू डोंट हैव, यू जस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि पैसेजेस, हाँ हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, कौन सी इस ये सारी चीजें जो बिगर पिक्चर होती हैं ऑफ कोर्स वो पता होनी चाहिए। Yeah, but ऐसे without having a proper plan, bigger picture की बगैर ऐसे अगर पढ़ लूँ. सॉरी प्लीज, कैन यू रिपीट? Yeah, like अपने mind में इसको बस पढ़ लूँ for the sake of it without having the bigger picture in mind. Yeah. Okay, well, and secondly, I also wanted to say कि basically ये जो टेस्ट है ना, अब जवेरी द थिंग इज कि हम लोग ना यहाँ पे जीआरडी भी करवाते हैं और हम लोग जीमैट भी करवाते हैं। ओके, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं इन दोनों स्टूडेंट्स को अगर एक ही क्लास में बैठा दूं कभी, मुझे काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन दोनों टेस्ट की ना फिलोसफी बहुत डिफरेंट है। You have to understand the philosophy of how this test actually works.
हाउ इट इज नॉट जस्ट के जो कि इस टेस्ट के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, बट ये टेस्ट इटसेल्फ किस तरह पार्ट करता है, ये क्या चीज कर रहा होता है, और फिर मुझे क्या चीज, अगर ये फंडामेंटली, अगर क्लोजली रीडिंग is so important part of this test, then I have to be then it doesn't it make sense that if this is so important part of this test, I have to master this skill, reading closely. Okay, so yeah, i Yeah, have exactly. I have to master this skill because this is tested on so many levels, on so many levels. Okay. If it is tested, even it is tested on maths as well. maths के जो questions होते हैं ना, believe you me, एक questions होते हैं जो आपके यहाँ पे होते हैं word problems. Okay, word problems होती हैं, ये एसएटीज में भी होती थी. वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपकी जी मैट में, द मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चंस आर द वर्ड प्रॉब्लम्स, दे आर द वर्ड प्रॉब्लम्स. द मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते ही वर्ड प्रॉब्लम्स है. ओके, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, मैथ Okay. देखेंगे. अब व्हाट आई वांट टू से कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो इफ यू हैव अ रियली गुड क्लोजली रीडिंग आरसी स्किल, जो सीआर की जो स्किल होती है, क्लोजली रीडिंग वाली स्किल, कि यू हैव टू रीड द टेक्स्ट वेरी क्लोजली, तो फिर यहाँ पे भी यू हैव टू रीड वेरी क्लोजली. और क्लोजली रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है. वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन इट इज ऑल द मैथ्स यू हैव टू डू. उसकी अलजेब्राइक ट्रांसलेशन करनी होती है, क्या इसका अलजेब्राइक इक्विवेलेंट क्या होता है, वो आप नहीं कर सकते unless and until you understand this thing. So understanding the question is really important part. और फिर उसके लिए you have to work very closely without somehow connecting, losing the sight of connecting the things as well. Okay, अब मैं अगर इसको बहुत क्लोजली रीड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको छोड़ के अगर मैं इधर आ रहा हूँ नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स में, और मुझे पता ही नहीं कि इनका कनेक्शन आपस में क्या था, दिस इज अ डिजास्टर सिचुएशन. वो नहीं होती, और वो होती भी नहीं है. बट आई वांटेड टू से कि मुझे रीड करना है क्लोजली को, और मुझे अगेन ये पूरी सिचुएशन को एज अ होल भी समझना है. ओके, बट आई वांटेड टू से Okay. ओके, ये दिस इज मच इजियर जब हम लोग जाते हैं, लेकिन मैं इसको जस्ट ये बताना चाह रहा था कि रीडिंग द टेक्स्ट वेरी क्लोजली इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल, इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल. अब बेसिकली जो हम लोगों ने कल किया था, वो क्या किया था कि हम लोग दैट पार्ट ऑफ द पैसेज में गए, और वहां पे हम लोगों ने एनालाइज किया उस पार्ट ऑफ द पैसेज को, और उसमें से मैंने इन्फ्रेंस को ड्रॉ किया. ओके, मैंने इन्फ्रेंस को ड्रॉ किया. जो इन्फ्रेंस होती थी वो मस्ट बी ट्रू सिचुएशंस होती थी. ओके, और फिर जो मैंने इस तरह इन्फ्रेंसेस को देखा जब, तो फिर मेरी इससे आरसी की जो इन्फ्रेंसेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई समहाउ, और मेरी क्रिटिकल रीजनिंग में तो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होते ही हैं, तो वो भी मैं देख रहा था कि हो जाएंगे. ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि वर्ड, इफ टू दैट पार्ट ऑफ द पैसेज जो मुझे आरसी का उस पार्ट ऑफ द पैसेज में मुझे क्वेश्चन भेज रहा है, बट इफ इट हैज द आर्ग्यूमेंट दैट इज, इट हैज द फैक्ट, और उस फैक्ट्स की बेस पे एक ओपिनियन था, वो किसी का भी ओपिनियन था, फ्लेवर 2 आरसी या फिर फ्लेवर 3 आरसी ऑथर का ओपिनियन था, या फिर उन फैक्ट्स की बेस पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ओपिनियन था. ओके, बट आई वांट टू से कि टू दैट पार्ट ऑफ द पैसेज जहां पे मुझे भेजा जा रहा है, जहां पे मुझे क्वेश्चन भेज रहा है वापस, वो अगर आर्ग्यूमेंट हो तो उसको मैं कैसे क्लोजली रीड करता हूँ. आर्ग्यूमेंट को रीड क्लोजली करने का देयर इज द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप, कि आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट होता क्या है. आर्ग्यूमेंट इज समथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ फैक्ट, बट इट आल्सो हैज द ओपिनियन, एंड फैक्ट प्लस ओपिनियन मेक्स द आर्ग्यूमेंट. नाउ इफ यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग, इसका जो फंडामेंटल स्टेप होता है, यू समहाउ डिफरेंशिएट कि यार ये जो था ये ओपिनियन था, और ये जो था ये फैक्ट था. ओके, ये फैक्ट्स को अलग करना, सेग्रीगेट करना ओपिनियन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है. और आर्गुमेंट को समझने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ये बहुत ईजी स्किल होती है. बट व्हाट आई वांट टू से कि ये एक स्किल होती है जो आपने करना होता है. इट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. ये अगेन ये कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्किल होती है. फर्स्ट स्किल ऑफ कोर्स होती है, जो फर्स्ट स्टेप इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. फर्स्ट स्टेप नीड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट स्टेप. ये वो चीजें हैं, वो सारा इसमें वही सारी फिलोसफी है. नॉट वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग फैक्ट्स ओपिनियन से अलग करें, बट दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल. ओके, सो अब हम लोग जो आज देख रहे हैं ना, बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग, वो इनफैक्ट वो है ही ये कि ये जो मैंने अब आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना है.
अब आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करना है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, मुझे फैक्ट्स को ओपिनियन से डिफरेंशिएट करना है और मुझे आर्ग्यूमेंट्स को बेसिकली एनालाइज करके और वो वाला फंक्शन परफॉर्म करना है जो कि क्वेश्चन मुझे कह रहा था। ओके, थोड़ा सा इसको इस तरह देखें, थोड़ा सा इसको इस तरह देखें कि फैक्ट्स को एनालाइज किस तरह करते हैं वो तो मैंने समहाउ कल देख लिया था। फैक्ट्स को एनालाइज किस तरह करते हैं कि इन्फ्रेंसेस में ड्रॉ करता हूँ, फैक्ट्स को एनालाइज करके मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। जिस तरह इफ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, देयरफॉर ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाई, 100% ट्रू, मस्ट बी ट्रू। If A is greater than B, B is greater than C, these are both the facts. Okay, A is greater than B and B is greater than C. इनको एनालाइज करके मैं कंक्लूजन में पहुंच सकता हूँ, yes, B is greater than C. Okay, so what I want to say कि ये सारा जो था ये एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स था। ओके, जो हम लोगों ने कल देखा था। जो आज हम Okay. देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एनालिसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हम लोग देख रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट का अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, यू सेपरेट आर्ग्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, फैक्ट्स एंड नाउ आई आल्सो हैव द ओपिनियन। ओके, सो मेरे ख्याल से ये मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन लेट मी रिपीट इट अगेन। इफ आई से इट इज रेनिंग आउटसाइड, फैक्ट्स पे यू कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द फैक्ट्स, you cannot differentiate on the facts. Facts are something which are true. और इसलिए मैं कहता था कि जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे वो अगर उसकी स्टेटमेंट इस तरह की होती थी, जो क्वेश्चन होता था इटसेल्फ कि इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, कि जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ओपिनियन जो होता है वो उस तरह ऑपरेट नहीं करता जिस तरह फैक्ट ऑपरेट करता है। ओपिनियन इज समथिंग डिफरेंट। फैक्ट क्या होता है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये दिस इज अ फैक्ट, बट दिस इज, इसको ये इतना फैक्ट है और दिस इज सो रेलिवेंट फॉर एवरीबॉडी दैट इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, अब और कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं? शीप हैज टू हॉर्न्स, ये भी फैक्ट है, दिस इज ट्रू 100%, नोबडी कैन डिसएग्री ऑन द फैक्ट्स, nobody can disagree on the facts, nobody can disagree on the facts. Okay, जो फैक्ट्स होते हैं इसलिए वो ट्रू होते हैं, और जो क्रिटिकल रीजनिंग के जो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आते थे उनकी वर्डिंग इस तरह की भी होती थी कि इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, ओके, इसका मतलब है कि ऊपर जो है वो फैक्ट्स हैं। ओके, अब अगर इस तरह की तो मैं इनकी बेस पे कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, और जो कंक्लूजन होता था वो कौन सा, इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू दे मोर स्ट्रांगली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस विच ऑफ द फॉलोइंग को सपोर्ट कर रही होती थी, यानी कि उनसे मैं एक कंक्लूजन को ड्रॉ करता था और वो बहुत मोर स्ट्रांगली सपोर्ट हो रहा था कंक्लूजन। किस तरह कि अगर मैं कहूँ कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, देयरफॉर ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, द कंक्लूजन इज वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स गिवन। ओके, so Javeri, is it making sense all कि हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे हैं सब? Yeah, it's all making sense. ठीक है, Yeah, the drawing is a वो जो terrible, डायग्राम निकलता है वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है, but it's fine. yeah, but yeah, ये थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग का है थोड़ा सा इशू। I had been a नहीं, very handwriting का नहीं, it's perfectly fine. ठीक है, आपने जिस तरह मैप किया हुआ है and everything, it's good. चलें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर मैं थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाता हूँ। अब द हाँ, सिचुएशन, सही है. या अब द सिचुएशन है इसके यहाँ पे बेसिकली आई अगर मुझे वहां पे आर्ग्यूमेंट अगर आ गया, जिस दिस द पार्ट ऑफ द पैसेज वेयर द क्वेश्चन इज सेंडिंग मी, इफ इट इज एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि फ्लेवर 2 में और फ्लेवर 3 में आर्ग्यूमेंट्स होते थे, और तो फिर मुझे उसका एनालाइज इस तरह करना होता है कि मुझे सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होता है फैक्ट्स को ओपिनियन से। फैक्ट्स को मुझे ओपिनियन से डिफरेंशिएट करना होता है। फैक्ट्स वो चीज, इट इज एज सिंपल एज दैट, फैक्ट्स में यू हैव टू एग्री ऑन द फैक्ट्स। ये हुआ था, ही वेंट आउट, इनफैक्ट ये भी फैक्ट होता है कि ही सेड दिस थिंग, और जो उसने सेड कहा था वो बेशक उसका ओपिनियन हो, बट ही रियली सेड दिस थिंग, दिस इज आल्सो अ फैक्ट, ही सेड इट। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? Yeah, अब अगर मैं ये कहूँ कि जो कि yeah, like अब उसने ये कहा था दिस इज अ फैक्ट, और उसने जो कहा था वो बेसिकली ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन उसने ये कहा था दिस इज अ फैक्ट, इस पे नोबडी कैन डिसएग्री कि उसने ये वाकई ये कहा था। ओके, लेकिन उसने क्या कहा था वो एक ओपिनियन हो सकता है, उस पे अगेन मेरा डिफरेंशिएट उसमें मैं कर सकता हूँ। दिस इज अ लेयर अपॉन अ लेयर। जो फर्स्ट लेयर है वो ये है कि यार उसने ये कहा था, यस उसने ये कहा था, 100% उसने ये कहा था, और उसने क्या कहा था वो अगेन ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसने ये कहा था इन द फर्स्ट प्लेस, दिस इज अ फैक्ट। ओके, तो व्हाट आई वांट टू से कि जो फैक्ट्स होते हैं उस पर डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, दे आर ट्रू।
सो बिकॉज ये हम लोगों ने कल भी देखा था, और जो ऊपर इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में चीजें आती थी वो फैक्ट्स होती थी, और इसलिए क्वेश्चन जो होता था नॉर्मली ये कहता था, इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, द स्टेटमेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फैक्ट और इट कैन बी द ओपिनियन, बट इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू इट मींस देयर इज नो ओपिनियन, इट इज जस्ट द फैक्ट. ओके, तो द थिंग इज Okay. ये जो फैक्ट्स होते हैं उन पे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता. वही वाली बात जो हमने डिस्कस की थी कि फैक्चुअल पैसेज है एंड देयर इज नो यस ऑथर्स यस. ओपिनियन हियर. अब जो कि फैक्चुअल पैसेज आगे अब अगर मैं उसको कनेक्ट करूं जो आप अभी बात कर रही हैं वो ये है कि व्हाट इफ इट इज अ फैक्चुअल पैसेज इटसेल्फ इज अ फैक्चुअल, तो उसका मेन पॉइंट क्या होता था कि वो उसका जो मेन पॉइंट होता था वो समरी हो जाती थी, राइट. फर्स्ट पैराग्राफ की Yeah. समरी और नॉर्मली सेकंड पैराग्राफ की समरी, और वो नॉर्मली बेसिकली सेपरेटेड होती है एंड से, वो नॉर्मली एंड से सेपरेटेड होती है. Okay. So the thing I want to say, the skill that you have to differentiate facts from the opinions, it is a really important skill. It is a really important skill. और वो हम लोग आज जो questions करने लगे हैं उसकी सबसे important skill है, और आज it is also possible because मेरी assumption ये है कि if you have an off from office, so अगर थोड़ा सा अगर भर भी जाता है आज का जो हमारा lecture है तो फिर भी इट्स परफेक्टली फाइन, राइट. Yeah. ठीक है ठीक है. नहीं, सो आप क्या कह रहे हैं कि वो अगर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है लेक्चर, yeah, sure, it's perfectly fine. ठीक है, आज का थोड़ा सा इट इज पॉसिबल कि लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए. ओके, सो ये जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं सारी ये चीजें थी कि बेसिकली फैक्ट्स क्या होते हैं, ओपिनियंस क्या होते हैं. इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरह भी कहूँ कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, यस इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड. अगर इट इज रेनिंग आउटसाइड तो फिर इसका इन्फ्रेंस क्या होगा, इन्फ्रेंस ये होगा कि इट इज it is not some other condition outside, it is but raining, कुछ इस तरह का. The weather is necessarily cloudy because if there's no clouds there's no rain. Okay, so what I want to say कि इस तरफ inferences इस तरह operate करती हैं. अब वो जो opinions होते हैं वो क्या होते हैं कि it is raining outside. मैं बिलाल को कहता हूँ कि it is raining outside, therefore we should not go to Islamabad via GD road. Okay, GD road जाना चाहिए. अब जो this is my opinion. Fact tha, it is raining outside. My opinion based on the fact is we should not go to Islamabad via GT road. Okay, this is my opinion. This is my opinion, and this is the conclusion that I drew from the fact. Making sense? Yeah. So this is the opinion is based on the fact, and the fact was कि it was raining outside. The opinion is therefore we should not go to Islamabad via GT road. Okay. अब बिलाल जो है, जो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, वो कहते हैं कि it is raining outside, it is a fact, he has to agree on this fact. और वो कहते हैं कि it is raining outside, but we should go to Islamabad because the meeting is so important. अब जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जो फैक्ट है उस पर मैं एग्री कर रहा हूँ. और जो इसलिए जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि इफ द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, फैक्ट्स ट्रू होते हैं, ओपिनियंस में डिफरेंस आ सकता है, और लेकिन फैक्ट्स में डिफरेंस नहीं आ सकता. फैक्ट्स आर 100% ट्रू. यू हैव टू एग्री विद द फैक्ट्स. ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज जो मैं जो एनालाइज एन आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि आई हैव टू डिफरेंशिएट ओपिनियंस फ्रॉम द फैक्ट्स. क्रिटिकल रीजनिंग में ये स्किल भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है, बहुत जल्दी मास्टर हो जाती है कि सेपरेट. Differentiate opinions from the facts. यस, डिफरेंशिएटिंग फैक्ट्स फ्रॉम द ओपिनियंस. ओके, जो फैक्ट्स हैं उनको ओपिनियन से डिफरेंशिएट किया जाए. Okay. हम लोगों ने एक क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज देखा था जो था रोलिंग पिन वाला. ओके, यू रिमेम्बर दैट क्रिटिकल रीजनिंग पैसेज, रोलिंग पिन, जो रोलिंग पिन वाला पैसेज था. Yeah, rolling pin, fathers and sons. या जो फादर सन पेयर रोलिंग पिन है. अब उसमें क्या था, इट वाज ऑल फैक्चुअल, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स. देयर वाज नो ओपिनियन एट ऑल. जब आपको क्रिटिकल रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ ना, जब आपके पास फैक्ट्स आते हैं, ओके, जब से फैक्ट ही थे और नो ओपिनियन एट ऑल, द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग. और फिर हम लोग बेसिकली इसका रिलेशनशिप बताते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ. व्हाट आई वांट टू से
कि जब भी हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग में जब भी हमारे पास फैक्चुअल पैसेज होता है, यानी कि जो मेरे पास पैराग्राफ आया, जो पैसेज यहाँ पे पैराग्राफ सिंगल पैराग्राफ पैसेज होता है, जब भी वो फैक्चुअल होता है, द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड वो बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि मस्ट बी ट्रू क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इन्फ्रेंस क्वेश्चन आ जाते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, और पैराडॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, पैराडॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्फ्रेंस क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो इनके लिए क्या होता है कि जो पैसेज जो था मेरे पास, जो कि पैसेज आया था फर्स्ट पैराग्राफ, वन पैराग्राफ पैसेज, उसमें इसका मतलब ये होता है कि वी हैव जस्ट द फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, वी हैव जस्ट द फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। ओके, वी हैव जस्ट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं होती। लेकिन बट क्रिटिकल रीजनिंग का वो वाला जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्स होते हैं और वहाँ पे कंक्लूजन होते हैं, और इनके लिए मुझे फैक्ट्स को और कंक्लूजन को सेपरेट करना पड़ता है। द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड वो क्या होता है? अब नाउ नाउ इफ इट इज एन आर्गुमेंट, और जो ये वाला था ये आर्गुमेंट नहीं था, ये जस्ट फैक्ट्स था। इफ नाउ दिस इज एन आर्गुमेंट, इफ दिस इज एन आर्गुमेंट, इट मीन्स कि नेसेसरीली यहाँ पे मेरे पास ओपिनियंस भी होंगे, ओके, कंक्लूजन्स होंगे। अब if it has a conclusion plus opinion plus fact, this whole thing is an argument. When the moment it becomes an argument, उसके ऊपर disagree मुख्तलिफ लोगों की हो सकती है। Different people can disagree with this argument. Different people can disagree with this argument. Okay, different people can disagree in the same way. They can also be the people who would agree with this argument. Making sense? Yeah, I get it. Different people can like Yeah. The situation is agree or disagree, or yeah. everyone's entitled to their opinion. Yeah, the situation is the moment it becomes an argument, you can have the opinions. अब जो opinions होते हैं वो क्या कहते होते हैं कि opinions यानी कि लोगों का opinion इसके साथ in sync हो सकता है, in sync opinion हो सकता है, और लोगों का जो opinion इसके साथ out of sync हो सकता है। Okay, but there are going to be the opinions और जो कि जो इस आर्गुमेंट में ओपिनियन है उसके साथ इन सिंक है और या फिर उसके साथ आउट ऑफ सिंक है। ओके, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जब भी हमारे पास ओपिनियन आ जाता है। फैक्ट्स के साथ डिफरेंस ऑफ फैक्ट्स नहीं हो सकता। डिफरेंस ऑफ हमेशा ओपिनियन ही हम लोग कहते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज डिफरेंस ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स पे आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते किसी के साथ। ओके, तो इज इट मेकिंग Right. So facts are facts. Just yeah, stated facts as is a fact. stated There is as. no such thing as a difference of fact, but there is a thing which is called difference of opinion. Or the moment we have the conclusion, it becomes an argument. Whenever we have an argument, it means necessarily it will have an opinion. अब the moment it has an opinion, उसके साथ agree किया जा सकता है, उसके साथ disagree किया जा सकता है। Making sense? आप repeat कर सकते हैं please? Okay, no problem. At the moment the thing becomes Need an the argument. last sentence. Okay, the moment that the passage becomes an argument, उसके साथ agree किया जा सकता है because it will have an opinion. Necessarily it will have an opinion. Fact होंगे और फिर opinion होगी। अब इस argument के साथ as a whole, because now this thing whole becomes an argument, इसके साथ agree किया जा सकता है, इसके साथ disagree किया जा सकता है। और agreement भी और disagreement भी वो opinion जो होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा penetrate करूँ, Yeah, like वो तो जो yes, argumentative passage बन जाता है ना। can you please repeat? Can you please your voice just And an argumentative passage. जवेरी, आपकी जो वॉइस है ना वो थोड़ी सी ब्रेकअप हो रही है। यस, Okay, I think for the next few minutes मैं थोड़ा कम बात करती हूँ क्योंकि the thing is it is raining outside and वो like I can't help it, मेरी तरफ से सिग्नल थोड़ा वीक होगा, लेकिन luckily मुझे आपकी आवाज loud and clear आ रही है, तो I'll just keep listening to what you have no, to say. if you have to communicate, you can just text me, WhatsApp me कर दे, no problem at all. If you feel like you have to ask me something. I'm good. आप continue करें, मैं सब सुन रही हूँ. It's fine. ठीक है, perfect. अच्छा, the situation is the moment it becomes an argument, I can agree or I can disagree. It means the people can also agree or disagree. It means कि there are I have one question though. Please go ahead. ये argumentative passages मैंने जहाँ तक देखे हैं, it's usually where they obviously have a मतलब एक side support कर रही होती है story को and दूसरी side थोड़ी against होती है, and we can either form a opinion for, opinion against, or we can stay neutral. ठीक है, but this whole thing ये कहाँ पे आपने देखी है?
Yeah, GMAT में it's different that we can't really stay neutral. अब सिचुएशन देखें कि यहाँ पे ना इनफैक्ट it is not I who has to agree. In fact, there are going to be other players. उनके जो एग्रीमेंट है इस वाले आर्ग्यूमेंट के साथ वो है कि उनका डिसएग्रीमेंट है इस आर्ग्यूमेंट के साथ, वो हम लोगों ने देखना होता है. सो यस, दे आर गोइंग टू एग्री और दे आर गोइंग टू डिसएग्री. दे नेवर आस्क इन द क्रिटिकल रीजनिंग एंड on the reading comprehension whether I agree or disagree. They never ask. Yeah, मैं viewers की बात, मतलब मैं passage के players की बात Yeah, कर रही हूँ. पैसिफिक के प्लेयर्स जो होते हैं, yes, Will 100%, there be 100%. a neutral opinion This present? this is 100% true. This is 100% true. In fact, in the passage you can have multiple players. You can have an anthropologist और उसके बाद you can have the economist. वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली डिसएग्री कर रहे होते हैं. जिस तरह हम लोगों ने आरसी के पैसे भी देखा था, बोर्जोआजी फेमिनिस्ट जो थे वो सोशल फेमिनिस्ट के साथ इन कंट्रास्ट थे. ओके, सो यस, व्हेन दे आर मल्टीपल प्लेयर्स तो वो आपस में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है. उसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्लेयर्स तो मल्टीपल ओपिनियंस ऑन द सेम थिंग. डेफिनेटली दिस इज 100%. कि कोई चीज होती है उस पे ये लोग डिसएग्री करें कि एग्री करें, और वो सारी चीज मुझे देखनी होती है. तो या Okay. दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट. और कौन किसके साथ एग्री कर रहा है, कौन किसके साथ डिसएग्री कर रहा है, इट इज आल्सो रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वो बहुत अंडरस्टैंड. बस हमने जितने passages पढ़े उसमें multiple opinions थे, तो I यस, derive that, you know, या दिस I इज feel इम्पोर्टेंट. like there is a positive, a negative, and 100%, probably a 100%. neutral as इनफैक्ट well. यस, हमने जो बोर्जोआजी फेमिनिस्ट वाला किया था उसमें देवर टू ओपिनियंस, देवर टू आर्ग्यूमेंट्स. या फिर और उसके बाद जो हम लोग ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी किया था, उसमें जो थे वो पॉजिटिव ओपिनियन था और नेगेटिव ओपिनियन था अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल. यस, और उसमें जो ऑथर था वो फिर एक सिंक कर रहा था किसी एक ओपिनियन के साथ. सो व्हाट आई वांट टू से कि ये सारे Yeah, जो that's the thing. yeah, They go against definitely. and then they link up. Yes, तो this is really important. Yeah, this is really important. This is really important. Yeah, this is really important. ये है बिल्कुल इस तरह है. अब द सिचुएशन इज कि जो नॉर्मली जो ओपिनियंस होते हैं ना, बिकॉज दे आर सो इम्पोर्टेंट, तो फिर ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बिकॉज दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग कहते हैं कि दे आर द इंडिकेटर ऑफ कंक्लूजन. दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ कंक्लूजन. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और बिकॉज ऑफ जिस तरह यू मेंशन कि बिकॉज देयर कैन बी द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, इस तरह जो शिफ्टिंग वर्ड्स होते हैं, कंट्रास्ट के वर्ड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये हमने सब कुछ देखा हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. तो इसका मतलब ये कि देयर आर द वर्ड्स व्हिच आई शुड, वो मेरी नजरों से स्लिप नहीं करने चाहिए. I should have somehow my radar should be able to detect these words, जो कि ये shift वाले words होते हैं. और इसी तरीके से जो कि big जो कि opinion की तरफ जो हमें लेके जा रहे होते हैं वो words भी. okay, so they are yeah, the the really transition important words. words. Yeah, they are the really important words. ये हमें इनका पता होना चाहिए बिल्कुल. So this is the situation. This is the situation. ये basically आज यही हम लोग डिस्कस करें कि जो कि है किस तरह हम लोगों ने एनालाइज करना होता है और क्या चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें वापस पैसेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है वो भेज रहा होता है. सो दिस इज ओपिनियन. और फिर जब मैं रीड कर रहा होता हूँ फर्स्ट रीड थ्रू, उसमें मैं देख लेता हूँ कि दे आर मल्टीपल प्लेयर्स. तो ये वाला जो प्लेयर है ये यहाँ पे मेंशन था, इसके जो आर्गुमेंट था जो यहाँ पे था, और जो ये वाला बी प्लेयर है उसका आर्गुमेंट यहाँ पे था. इनका आपस में रिलेशनशिप क्या था, अगर वो ऑथर का ओपिनियन आ जाता है उनका, उसका आपस में रिलेशनशिप इनके साथ क्या था, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या था. दीज आर द कनेक्शंस दैट नेसेसरीली आई हैव टू मेक. दे आर द रियली इंपॉर्टेंट कनेक्शंस. ये मुझे ब्रॉडर पिक्चर का आइडिया दे देते हैं. फिर मुझे स्मॉलर पिक्चर में जाना होता है, तो फिर स्मॉलर पिक्चर में जाके मैं यहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे फैक्ट्स को एनालाइज करना होगा, या फिर मुझे फैक्ट्स को प्लस ओपिनियंस को एनालाइज करना होगा. इफ आई हैव टू एनालाइज फैक्ट्स प्लस ओपिनियन, दिस इज समथिंग व्हिच इज नो आर्गुमेंट. इट मींस कि जो आर्गुमेंट है, इट इज आल्सो पॉसिबल कि मुझे आर्गुमेंट को वहाँ पे एनालाइज करना होगा. और जो आज हम लोग अभी क्वेश्चन देखने लगे हैं, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन ऑफ कोर्स नहीं देख सकेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करें. हम लोग आर्गुमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे. और आर्गुमेंट का मतलब ये है कि उसमें नेसेसरली ओपिनियन होगा. जो कि हम लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जो मस्ट बी ट्रू वाला क्वेश्चन था, जिसमें रोलिंग पिन थी, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स थे. उनको एनालाइज किस तरह करना था वो हमने देखा था. वो बहुत ईजी था. जो कल भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे वो भी इन्फ्रेंसेस के थे, वहां भी हम लोग सिर्फ फैक्ट्स को ही बेसिकली एनालाइज कर रहे थे. सो अगर हम लोग देखते हैं कि दूसरी क्या चीज होती है, दूसरी होती है फैक्ट्स प्लस ओपिनियंस. वो होते हैं आर्गुमेंट्स. आर्गुमेंट्स को किस तरह एनालाइज करना होता है. द मोमेंट यू हैव फैक्ट्स प्लस ओपिनियन, दिस होल थिंग बिकम्स एन आर्गुमेंट. अब इनके साथ एग्री और डिसएग्री किया जा सकता है. इसका मतलब ये होता है, ये है कि ब्रॉडली स्पीकिंग आई कैन डिवाइड द ग्रुप
इन टू पार्ट्स, जो कि इस आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री डिसएग्री कर रहा होगा। जो अभी द थिंग दैट यू मेंशनड एज वेल, कि जो ये वाला आर्ग्यूमेंट था एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, तो जो जो कि एनवायरमेंटलिस्ट का आर्ग्यूमेंट था वो उनके साथ डिसएग्री कर रहा था। और हो सकता है कि जो कि फंडामेंटलिस्ट हों या फिर पॉलिटिशियंस हो, उनका जो आर्ग्यूमेंट है इसके साथ एग्री कर रहा हो। सो व्हाट आई वांट टू से और उसमें भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो होता है फैक्ट्स प्लस ओपिनियंस के अंदर, जो ओपिनियन वाला पार्ट होता है उसके साथ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा होता है। ओके अब इसका मतलब ये है Okay. कि बेसिकली अगर एक ओपिनियन, किसी भी ओपिनियन को इन आइसोलेशन देखता हूँ, अगर मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट को इन आइसोलेशन देखता हूँ, यानी कि उसमें फैक्ट्स प्लस ओपिनियन है, उसको अगर मैं इन आइसोलेशन देख रहा हूँ, इस वाली सिचुएशन को, ये दैट इज कि जो फैक्ट प्लस ओपिनियन वाली सिचुएशन थी, अगर मैं उसको इन आइसोलेशन देख रहा हूँ, तो फिर बेसिकली व्हाट आई कैन डू, उसको उसको अगर मैं उसको उसके साथ मैं ये देख सकता हूँ कि उसके साथ कौन बेसिकली, अब मैं उसको इस तरह देख सकता हूँ, जब मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ जाता है, अगर मैं उसको सिर्फ इन आइसोलेशन देख रहा हूँ कि फैक्ट प्लस ओपिनियन आ गया, तो यानी कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट हो गया। अब उस आर्ग्यूमेंट के साथ उसमें जो ओपिनियन था, मुझे नेसेसरीली ओपिनियन के साथ ही बेसिकली जो आपका इस आर्ग्यूमेंट का ओपिनियन होता है उसके साथ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो रही होती है। ओके तो इसका मतलब ये कि मुझे सबसे पहले फैक्ट्स को अलग कर लेना चाहिए और ओपिनियन से, क्योंकि अगर कोई भी इसके साथ एग्री कर रहा होगा, या फिर जो लोग इसके प्रो थे, या फिर कुछ लोग थे जो कि इसके अगेंस्ट थे, जो कि अगेंस्ट थे वो क्या करेंगे, मेरे ओपिनियन को अटैक करेंगे। ओके सो वो ऑफ कोर्स फैक्ट्स को अटैक नहीं करेंगे, और अगर फैक्ट को अटैक कर रहे होंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो इनकरेक्ट आंसर चॉइस होती है ब्रॉडली स्पीकिंग। जो व्हाट आई वांट टू से, कि जब मेरा आर्ग्यूमेंट था, अगर किसी ने अटैक करना है, नो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मेरे अगर आर्ग्यूमेंट को किसी ने अटैक करना है, तो वो मेरा जो ओपिनियन था उसको अटैक करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसी को बेसिकली अटैक किया जा सकता है, फैक्ट को तो अटैक प्रूफ होता है वो। और इसी तरीके से मेरा जो आर्ग्यूमेंट था, उसको अगर किसी ने मेरी हेल्प करनी हो, तो वो कोई इस तरह की चीज लेके आएगा जिससे जो मेरा ओपिनियन है वो समहाउ स्ट्रेंथन हो जाए, और मेरा ओपिनियन स्ट्रेंथन होने से मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ है वो इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि फैक्ट्स की बेस पे जो ओपिनियन ड्रॉ किया है वो कितना स्ट्रांगली ड्रॉ किया है। और जब मोस्ट स्ट्रांगली पॉसिबल ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग इन्फ्रेंसेस कहते हैं, वो मस्ट बी ट्रू होते हैं। ओके तो ऐसा देखें, जो मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो कंक्लूजन है, वो फैक्ट से कितना स्ट्रांगली ड्रॉ हुआ है, कितना स्ट्रांगली नहीं ड्रॉ हुआ। ओके अब इसका मतलब क्या होता है कि फैक्ट से ओपिनियन स्ट्रांगली ड्रॉ होना या फिर नॉट स्ट्रांगली ड्रॉ होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इफ आई से कि इस्लामाबाद हैज 5 मिलियन पॉपुलेशन, कराची हैज 15 मिलियन पॉपुलेशन, एंड लाहौर हैज 2 मिलियन पॉपुलेशन। सो दीज आर द फैक्ट्स, राइट? इनको इन फैक्ट्स पे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। व्हाट आई वांट टू से कि इन फैक्ट्स की बेस पे अगर मैं कंक्लूजन को ड्रॉ करता हूं, देयरफॉर वी शुड मूव टू इस्लामाबाद, डू यू थिंक दैट माय the opinion that I created is based on the facts that I have presented? The opinion that I have presented is based on the facts that I have presented. उन फैक्ट्स की बेस पे मैंने कंक्लूजन को ड्रॉ किया कि नहीं किया? इस्लामाबाद हैज 5 मिलियन पॉपुलेशन, लाहौर हैज 10 मिलियन पॉपुलेशन, कराची हैज 15 मिलियन पॉपुलेशन, therefore we should move to Lahore. Do you think moving to Lahore, which is my opinion, is based on the facts, or the opinion is drawn very strongly from the facts? Do you think? It's drawn strongly from the facts because your preference is to live in a place with fewer नहीं नहीं people. नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना, अगर मैं किसी को ये बात करता हूँ, मैं 3 फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूँ, और उन फैक्ट्स की बेस पे मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। ये इन फैक्ट्स की बेस पे स्ट्रांगली ड्रॉ नहीं हो रहा। और किसका स्ट्रांगली ड्रॉ होता है? इफ आई से ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, इसका मतलब है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ओके इफ आई से कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, दिस इज अ फैक्ट, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, इफ आई से ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, ओके तो फिर ये भी फैक्ट 1 हो गया, फैक्ट 2 हो गया। इनकी बेस पे कि मैं कंक्लूजन को ड्रॉ करूंगा, तो वो कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा? देयरफॉर ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये सारे बर्ड्स थे, ऑस्ट्रिच इज आल्सो अ बर्ड, देयरफॉर ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई। अब फैक्ट 1 और फैक्ट 2 की बेस पे मैंने कंक्लूजन को ड्रॉ किया था, वो बहुत स्ट्रांगली ड्रॉ हुआ था। ओके Okay. this was drawn so strongly, this is called the strongest possible argument। इसको इस तरह आप देख सकते हैं
कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता, इसको वीकन भी नहीं किया जा सकता। दिस इज 100% ट्रू कंक्लूजन। और दिस इज नो, इसमें ये क्या था, हम लोगों ने इन्फ्रेंसेस जो ड्रॉ होती है ना वो कंक्लूजन्स होते हैं, लेकिन वो सोलली फैक्ट से बेस इस तरह आते हैं कि उनके ऊपर मैं $100 मिलियन बेट कर सकता हूँ। वो इतने स्ट्रांगली ड्रॉ हुए होते हैं। ओके, सो अब मैं अगर ये फैक्ट लेके आता हूँ कि फैक्ट नंबर 1, इस्लामाबाद हैज 5 मिलियन पॉपुलेशन। Number two, fact number two, Karachi has 10 million population. Therefore, we should move to Karachi. Yeah, but therefore, Karachi is a beautiful city. Do you think that the conclusion is derived from the facts, the way the conclusion was derived from the first argument, which was all birds can fly, ostrich is a bird, therefore ostrich can fly. From which facts the conclusion was drawn very strongly? This वाला argument या फिर this वाला argument जो कराची इस्लामाबाद का argument था? Karachi, Islamabad. No, Wait, ostrich wala, ostrich हाँ, wala. ऑस्ट्रिच वाला। ओके, उसमें फैक्ट्स इस तरह के थे कि कंक्लूजन जो था वो बहुत स्ट्रांगली ड्रॉ हुआ था। ओके, सो व्हाट Yeah, आई it was वांट बहुत टू से, strongly drawn होता है, यस, yeah. अब बेसिकली क्या That होता है, ostriches यस, can अब fly. यस, एग्जैक्टली, अब सिचुएशन बेसिकली क्या होता है कि जो आर्गुमेंट होता है, इफ इट इज नॉट दिस काइंड ऑफ एन आर्गुमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंस जो ड्रॉ करनी होती हैं, और बेसिकली तो फिर अगर कोई दूसरा आर्गुमेंट है, इफ इट इज नॉट दिस काइंड ऑफ एन आर्गुमेंट, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है या फिर वीक आर्गुमेंट हो सकता है। मेकिंग सेंस? कि अगर अगर बहुत स्ट्रांगली ड्रॉ होती हैं फैक्ट से तो वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। दिस इज द एपिटमी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल आर्गुमेंट, जो कि ऑस्ट्रिच ऑफ बर्ड्स वाला था। इट वाज समहाउ द एग्जांपल ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट कैन एवर बी क्रिएटेड। इसके बाद जो सारे आर्गुमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, यानी कि उनको फर्दर स्ट्रेंथन हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उनको हम लोग फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं तो फिर उनको हम लोग फर्दर वीकन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्गुमेंट आपका क्रिटिकल रीजनिंग में आता है वो बेसिकली ये होता है इस तरह का कि जो जिसको मैंने स्ट्रेंथन और वीकन करना होता है आर्गुमेंट को, कि वो 100%, यहाँ पे 100 उसकी स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे 0 स्ट्रेंथ होती है, और वो कहीं पे बीच में आ रहे होते हैं। यानी कि वो आर्गुमेंट जो मुझे प्रेजेंटेड होगा वो यहाँ पे होगा, जिसको मैं फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता हूँ और मैं उसको वीकन भी कर सकता हूँ। मेकिंग सेंस? वीकन करना यहाँ पे जाना होता है और स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पे जाना होता है। ओके, लेकिन वो 100% उसको मैं यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। और जो कि आर्गुमेंट आते हैं वो वाले आर्गुमेंट जो कि क्रिटिकल रीजनिंग के इन्फ्रेंस के अलावा आर्गुमेंट होते हैं, वो 100% स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स भी नहीं होते। मेकिंग सेंस? फर्स्ट इसको इस तरह देखें। क्रिटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं। जो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे हम लोगों ने कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है, और वो कंक्लूजन जो ड्रॉ हो जाता है वो 100% ट्रू होता है। मेकिंग सेंस? लेकिन अगर मुझे व्हाट Yeah. पैसेज आया है उसमें अगर मेरे पास अगर खुद एक आर्ग्यूमेंट है, तो वो जो आर्ग्यूमेंट है वो 100% स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होता। वो कहीं बीच में स्पेक्ट्रम में होता है, जो कि जो जहां पे फैक्ट्स के बेस पे कंक्लूजन को ड्रॉ हो रहे होंगे, और वो 100% स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होता। 100% स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 100% स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो उसको मैं फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। उसको मैं फर्दर स्ट्रेंथन करके 100% पे लेके आ सकता हूँ, नहीं, लेकिन उसमें रूम होता है कि मैं उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर दूं, और उसको मैं फर्दर वीकन भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मैं कौन सी साइड में हूँ। मैं अगर इसका फ्रेंड हूँ तो मैं इसको स्ट्रेंथन करूंगा, अगर मैं इसका एनिमी हूँ तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ को मैं Okay. वीकन करूंगा। मेकिंग सेंस है Yeah, yeah. समहाउ? ओके, इसमें हम लोग क्वेश्चन अभी देखते हैं। अगेन यू जस्ट हैव टू गिव मी 5 मिनट्स की ब्रेक, और हम लोग 5 मिनट्स तक रिज्यूम करेंगे। यू कैन ऑल्सो गो अराउंड एंड हैव सम वाटर, जस्ट 5 मिनट्स। ओके, आई विल टेक्स्ट यू ऑन द व्हाट्सएप, यू कैन हैव द 5 मिनट्स ब्रेक, और 5 मिनट्स के बाद हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं। आई विल हैव द ब्रीदर एज वेल। Okay, so आई विल are you व्हाट्सएप यू closing the व्हाट्सएप call? यू या आई विल व्हाट्सएप यू आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का ब्रीदर। Okay, sure, sure. Thank you.
ओके, यू विद अस? आप हैं यहाँ पे? Javiria, you here? Yeah, I'm here. Perfect, perfect. So basically what I wanted to say, Javeria, कि यहाँ पे ना हम लोगों के पास basically जो argument होता है when in the critical reasoning question it is inside the passage, okay? जब ये उस हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करें जो आपके पास पैसेज आया उसमें जब आपके पास आर्ग्यूमेंट 100% कंफर्म कि दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, जो क्रिटिकल रीजनिंग का आपके पास आया तो वो आर्ग्यूमेंट था, ओके? यू अंडरस्टैंड कि जब भी आर्ग्यूमेंट होगा उसको उसमें क्योंकि डेफिनेटली ओपिनियन होगा और जो ओपिनियन होता है उससे उसको स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है। यानी कि मैं अब देखें, अब सिचुएशन ये है कि अगर ये एक इस लेवल का आर्ग्यूमेंट था जो कि इतना स्ट्रांग था, उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी, उसको मैं किस तरह स्ट्रांग कर सकता हूँ, उसको मैं फर्दर किस तरह स्ट्रांग कर सकता हूँ इस वाले आर्ग्यूमेंट को जिसकी स्ट्रेंथ ये थी, उसको मैंने स्ट्रांग करना है, मैंने इस डायरेक्शन में लेके जाना है, अगर मैंने वीकन करना है तो मैंने इस डायरेक्शन में लेके जाना है। उसको मैं किस तरह स्ट्रांग कर सकता हूँ इस आर्ग्यूमेंट को, मैं कोई एक ऐसा फैक्ट ले आऊं जो कि मैं अब आर्ग्यूमेंट में प्लग करता हूँ तो फिर जो ये जो आर्ग्यूमेंट था ये स्ट्रेंथन हो जाए, ओके? और वो इस कंक्लूजन को फर्दर हेल्प कर रहा हो। लेकिन जो फैक्ट्स है ना उनकी बेस पे कंक्लूजन्स बनते हैं। अगर मैं एक और फैक्ट ले आऊं जो कि इस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। मेकिंग सेंस? Yeah, it makes sense. अब इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसा फैक्ट ले आऊं जो कि इस आर्गुमेंट में जो फैक्ट्स किसी बेस पे कंक्लूजन को ड्रॉ हुआ है, और मैं एक ऐसा फैक्ट ले आऊं जो कि इस वाले इस वाले अब जो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है इस वाले फैक्ट की वजह से जो बेसिकली ये वाला कंक्लूजन जो ये वीकन हो रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज वीकनिंग द आर्गुमेंट। ये होता कब है, वील सी, ओके? सो अब ये क्या कि वी आर प्लेइंग विद द आर्गुमेंट इटसेल्फ, वी आर स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट एंड वी आर वीकनिंग द आर्गुमेंट, ओके? नाउ हम लोग उस चीज में हैं जहाँ जिस राइटअप से हम लोग डील कर रहे हैं वो आर्गुमेंट है। नेसेसरीली उसमें हमारे पास फैक्ट्स और कंक्लूजन होगा। जो हम लोगों ने कल राइटअप्स देखे थे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल थे। ये बोथ ऑफ दी सिचुएशंस आर ऑल्सो ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपके पास फैक्ट्स होते हैं और आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओके? जो हम लोगों ने कल देखा था वो हम लोगों ने देखा ये था कि एनालाइजिंग द एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड देन ड्राइंग द कंक्लूजन। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एनालाइजिंग एन आर्ग्यूमेंट और उसमें ये सारी चीजें के फैक्ट्स की बेस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, इसको मैं फर्दर वीकन किसा कर सकता हूँ और इसको मैं फर्दर स्ट्रेंथन किसा कर सकता हूँ, इसको मैं वीकन किसा करूँ और मैं इसको स्ट्रेंथन किसा करूँ इस कंप्लीट आर्ग्यूमेंट को। ये भी हम लोग चीज देखने लगे, ओके? सो अभी देखते हैं, अब विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग ये देखते हैं हाउ टू डू दिस, हाउ टू गो अबाउट इट। अब देखते हैं हम ये एवरीथिंग इन द पिक्चर नाउ विल जो हम लोगों ने अभी एब्स्ट्रैक्ट वे में डिस्कस किया उसको देखते हैं, ओके? सबसे पहले फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, और ये बेसिकली अब ज़हन में ये रखना है कि ये हम लोग अभी क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं जिसके विल हैव 8 क्वेश्चंस, और लेकिन ये बेसिकली मेरी कौन सी स्किल्स को स्ट्रेंथन करता जा रहा है ये मैंने जहन में रखना है। ये मेरी रीडिंग क्लोजली द टेक्स्ट उस वाली स्किल को बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ये स्किल बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज होती है जीमैट में, नंबर ऑफ ओकेजन्स में। इनफैक्ट इट इज सो इम्पोर्टेंट स्किल, ये आपकी मैथ्स में भी टेस्ट होती है और इसलिए जो आपकी जीमैट की मैथ्स होती है उसमें क्या चीज टेस्ट होती है? Could you please repeat? रीडिंग क्लोजली द टेक्स्ट, रीडिंग Okay. क्लोजली द टेक्स्ट जो हम लोगों के पास राइटअप होता है, वी हैव टू गिव इट अ वेरी क्लोज रीड। ये टेक्स्ट ये आपको कहाँ पे टेस्ट होती है, ये आपको मैथ्स में भी टेस्ट होती है। इनफैक्ट जो मैथ्स में आपके जीमैट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट क्वेश्चंस आर वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये रीडिंग क्लोजली द टेक्स्ट ये फिर से आपका टेस्ट हो रहा होता है। Okay. तो अब ये जो हम लोग करेंगे, हम लोग जो क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं, ये हम लोग यही देख रहे हैं कि वी हैव टू रीड द टेक्स्ट वेरी क्लोजली। अब वी आर रीडिंग द टेक्स्ट सो क्लोजली कि इसमें हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बेसिकली मैंने करना क्या होता है, मेरे ये जो कंक्लूजन है उससे मैंने फैक्ट्स को अलग करना है, लेकिन इसमें आई हैव टू रीड एवरीथिंग वेरी क्लोजली, एवरीथिंग वेरी क्लोजली, ओके? सो लेट्स सी कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इन एक्चुअलिटी इसका मतलब क्या होता है, किस तरह करते हैं।
tiger sharks are common in waters surrounding Tenerife Island. Okay, there's some island. उस आइलैंड के जो सराउंडिंग वाटर है इसमें बेसिकली टाइगर शार्क्स हैं. ओके, दे आर कॉमन, यानी कि काफी ज्यादा टाइगर शार्क्स हैं. दिस इज नॉट अ रेयरिटी. वो नजर आ जाती है, अगर कोई देखना चाहे उसको नजर आ जाएगी. टाइगर शार्क्स आर कॉमन इन द वाटर सराउंडिंग टेनेरी आइलैंड. यूजली टाइगर शार्क्स, अब हम लोग अगेन इस पिक्चर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे एक टाइगर शार्क है. Usually the tiger shark feeds on the smaller sharks. Okay, ये जो smaller sharks हैं ये tiger shark थी. ये जो है ये usually they feed on smaller sharks. Okay, ये smaller sharks में basically उनको उनके ऊपर ये feed करती हैं. But is a really important word. Okay, इसके बाद जो चीज आती है वो बहुत important होती है. But sometimes they have attacked tourists swimming and surfing at Tenerife beaches. Okay, तो जो टाइगर शार्क्स है उन्होंने at times basically इनको खाने की बजाय, या फिर इनको तो खाती थी, लेकिन वो जो टूरिस्ट है उनको भी इन्होंने, उनका भी इनका दिल चाहा था कि इनको भी हम लोग कुछ करें. So usually tiger sharks feed on small sharks, but sometimes they have attacked tourists swimming and ये सिर्फ they are not these kind of sharks जो कि सिर्फ खाया और बस खत्म, लेकिन इन्होंने at times they attack the tourists who are swimming or who are surfing. Okay, the Tenerife beaches. This has this has hurt Tenerife's tourism industry. Of course, if they start attacking the tourists, जैसा ये tourist थे, तो of course ये अगली दफा यहाँ पे नहीं आएंगे. This thing entire situation कि smaller sharks को खाती हैं, लेकिन इन्होंने अटैक किया टूरिस्ट को भी. ये सारी जो सिचुएशन है इसका बेसिकली जो इफेक्ट है ऑन इकोनॉमी को ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है. ओके, नथिंग, इसमें कुछ भी आपके पास कभी भी रॉकेट साइंस नहीं होती. ये हम लोगों ने देखा कि बहुत ही इजी पैसेजेस होते हैं जिनको हम लोग हमेशा समझ सकते हैं. ओके, लेकिन हम लोगों ने इनको क्लोजली रीड करना होता है. दिस हैज हर्ट्स टेनेरीज टूरिज्म इंडस्ट्री. और इस इंडस्ट्री के बारे में बेसिकली बताया गया है जो कि दिस हैज हर्ट टेनेरीज टूरिज्म इंडस्ट्री. ओके, नॉट द इकोनॉमी. यहाँ पे इकोनॉमी का जिक्र नहीं था, यहाँ पे था टूरिज्म इंडस्ट्री को. इस पूरी सिचुएशन ने बेसिकली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है. और इस टूरिज्म इंडस्ट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है विच इज that it is second only to the fishing industry. Okay, इसका जो tourism industry का एक characteristic है, it is second only to that only to which industry? Fishing industry. Okay, so two things are mentioned. एक है fishing industry which is at number 1, अगर हम लोग इसको ये कहें, और फिर number 2 जो है वो है tourism industry. Making sense? Okay. Yeah. Okay, so again, this is the fishing industry, this is the tourism industry. और देखते हैं कि इनका आपस में लिंक है, ये किसी और चीज से रिलेटेड है. Fish, which is second only to the fishing industry in annual revenue. Okay, so again, these are the two industries जो कि annual revenue में contribute करती हैं. Okay, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू रीड द टेक्स्ट वेरी क्लोजली. ओके, उसको समझना किस तरह होता है और कितना, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पे जो चीजें होती हैं, जो पैसेज होते हैं उसको क्लोजली रीड करना है. कुछ बाहर से चीजें नहीं लेके आनी, लेकिन जो भी हमारे पास चीज होती है उसके साथ ही हमने डील करना होता है. ये सारी चीज मैं बस बेसिकली पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूँ. अब हुआ क्या कि बेसिकली एक बीच है टेनेरी आइलैंड. उस टेनेरी आइलैंड में बेसिकली उसके सराउंडिंग वाटर्स में टाइगर शार्क है. टाइगर शार्क जो है वो स्मॉल शार्क पे फीड करती. दिस इज द फैक्ट व्हिच इज गिवन. दिस इज, और फिर फैक्ट ये भी गिवन था कि जो टाइगर शार्क्स हैं दे हैव अटैक द टूरिस्ट. ओके, और इसकी वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुई. ओके, अब टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में एक और चीज बताई गई कि ये जो सेकंड है टू द फिशिंग इंडस्ट्री. नो एवरीथिंग जो हम लोग ने रीड करनी होती है क्लोजली रीडिंग में, नो एवरीथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट स्किम और आई कैन नॉट स्किप any information. You see कि मैंने कोई भी information को skip नहीं किया, और ये जो information थी itself was very easy to process. ये जो information थी it is always very easy to process, very easy to process. It is not going to be something जो कि difficult process हो. यहाँ पे you can never be tested on something जो कि formulas या फिर rocket science, nothing like it. It is deliberately, और ये हम लोगों ने कल भी देखा था, the situations are very easy to comprehend, but I have to work very closely with the text. This has hurt Tenerife's tourism industry, which is second only to the fishing industry. So fishing industry number 1, tourism industry number 2. In order to help the economy, okay, ये contribute करती है annual revenue में. अब now we have something which is economy. Okay, अब if it is an economy, it means कि necessarily जो industries हैं they are the part of the economies. Okay, they are the part of the economies. It means कि now we are talking about something bigger. Okay,
जिसपे इन इंडस्ट्री से जो एनुअल रेवेन्यू आ गया वो भी आ गया, और टूरिज्म इंडस्ट्री भी आ गई, फिशिंग इंडस्ट्री भी आ गई. नाउ दिस थिंग इज समथिंग बिगर विच इज द इकोनॉमी, राइट? Okay. Yeah. Okay. So in order to help the economy, therefore the mayor of the island, इस mayor island का जो mayor है जहाँ पे ये basically ये सारी situation जो है, ये एक और बड़ी picture आ गई जो कि आइलैंड है. ओके, इस आइलैंड के अंदर सब कुछ हो रहा है ये. और इसका जो मेयर है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ, इट सीम दैट ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. जो मेयर है जो इस आइलैंड का, in order to help the economy, therefore the mayor of the island has proposed an ongoing program to kill any tiger sharks within the 2 miles of the beaches. 2 miles of the beaches. Okay. अब बेसिकली इसने क्या किया है, इस आइलैंड में बेसिकली सारा कुछ हो रहा था. इसके सराउंडिंग जो था ये टाइगर शार्क्स हैं, जो हम लोग थोड़ा सा अगर इसको इस तरह बना लें. अब इसने क्या किया है कि हम लोगों ने वी हैव टू हेल्प द इकोनॉमी. और जो इकोनॉमी थी उसका बेसिकली उसमें ये चीजें थी, जो फिशिंग इंडस्ट्री थी और टूरिज्म इंडस्ट्री थी. समहाउ इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? क्योंकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी और जो फिशिंग इंडस्ट्री थी वो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी थी. ओके, एंड यू हैव टू हेल्प द इकोनॉमी. और ये सब जो चीज थी, ये पूरी सिचुएशन कहाँ पे ऑपरेट करी थी? ये आइलैंड में ऑपरेट करी थी. और इस आइलैंड का जो बेसिकली एक मेयर है उसने कहा है कि इन ऑर्डर टू हेल्प द इकोनॉमी, नाउ यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी, नाउ you this is your goal. In order to help the economy, therefore mayor of the island has proposed an ongoing program टू किल जो द टाइगर शार्क्स, जो कि इस टेरेरी आइलैंड के आसपास कॉमन पाई जाती हैं. ओके, तो उसने कहा कि टाइगर शार्क्स जो विद इन द 2 किलोमीटर नजर आती है उनको मार दो. ओके, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? No such confusion. It's Okay, fine. so this is the situation. अब होता क्या है? अब होता क्या? ओके, जो मैं कल भी कह रहा था जवेरिया, the thing is if you somehow have the good verbal skills, that is कि थोड़ा सा ये चीजें जो verbal का text होता है इसको अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं. अब इसका रीजन पता क्या होता है? Not everybody can comprehend the text, क्योंकि जो नॉन नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो कहाँ किस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने कभी बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ी होती, सारी कम्युनिकेशन उर्दू में होती है. ओके, सो इफ यू हैव समहाउ द एडवांटेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद द टेक्स्ट, तो फिर उसको आप ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. If you can understand it better, it means that you can get the answers correctly. So this can be your forte. जो कि verbal अगर forte हो जाता है, I cannot emphasize enough इसका कितना फायदा हो जाता है. इसका बहुत फायदा हो जाता है. ओके, सो द थिंग इज सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आइलैंड. उस आइलैंड का कंपोनेंट इकोनॉमी. उस इकोनॉमी वी हैव टू कंपोनेंट्स दैट आर मेंशन्ड. फर्स्ट इज द फिशिंग इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज द tourism industry. Now the sharks have impacted the, it is given that the sharks have impacted the tourism industry, right? क्योंकि वो टूरिस्ट जो थे उनको बेसिकली हर्ट करती थी, उनको अटैक करती थी, और टूरिस्ट जो है वो फिर उसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली वो अफेक्ट हो रही है. लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसके बारे में ये भी गिवन था कि वो फिशिंग इंडस्ट्री के बाद आती है, राइट? ओके, is it all making sense or not? Now I have worked Yeah, it's fine. I have worked very closely with the text, और मैं सारी सिचुएशन जो थी उसको मैंने देख लिया. If you want to take the picture of this diagram, you can take the diagram. If you don't want to take the picture, I'm going to remove it. Okay, क्योंकि we have to read the text जो कि इसके पीछे text. Okay, so I am removing the picture, removing all the whole diagram. Okay, yeah, अगर that's fine. The diagram is not allowing me to read it. Okay, but I wanted to say कि यहाँ पे ना you have to draw your own diagrams. इनको हम लोग क्या कहते हैं? your scrappy methods, जो बेसिक किसी को भी ना समझ आए. It's perfectly fine, but they should make sense to you. बस ये था कि Oh हम yeah, लोग like वो तो मेरे वो तो मेरे mind mapping के हिसाब से है ना, कि yes मुझे क्या ठीक लग 100%. रहा है, मुझे क्या. This is a very correct word, जो कि बहुत correct word है, कि जो भी mind mapping इसको कहते हैं कि what is in your mind, उसको किस तरह portray करते हैं कि जो बस it should make sense to you. अब लेकिन ये समझने के लिए Yeah, because I usually do a lot of flow charts, तो मैं flow chart बनाती रहती हूँ. awesome. This is a really good thing. उसका definitely बहुत फायदा होता है यहाँ पे. अब मैं एक क्वेश्चन को रीड किया था, वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू. अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि ये चीज किस तरह डिफरेंशिएट करती है जो हम लोगों ने पहले देखा था उसके साथ. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली गिवन है द थिंग दैट इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू. जो फॉलोइंग है वो क्या चीज है यहाँ पे? दिस इज द क्वेश्चन. जो ये अबव है ये फॉलोइंग है. ओके, अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह का आता था विच ऑफ द if the statements above if true, okay, जो हम लोगों ने कल देखा था, इसका मतलब क्या होता था necessarily कि above are the facts.
if the statements above are true, अगर मेरे पास इस तरह की चीज आती थी जो हम लोगों ने कल बहुत ज्यादा देखी थी, if the statements above are true, it means necessarily कि जो ऊपर जो चीजें given थी वो facts थे, right? Javeria, can you hear me? Can you just hold on for a second? No problem, no problem. मैं सिग्नल्स जो हैं वो थोड़े खराब हो रहे हैं because of the rain and everything, तो मैं अच्छा स्पॉट ढूंढ रही थी. Anyways, yeah, so we've got true likelihood and क्या आपने क्या कहा था अभी लास्ट 2 सेकंड्स में? या मैंने ये कहा था कि बेसिकली जो हम लोगों ने जो लास्ट हमारा सेशन था, जो कल सेशन हुआ था, विच उसमें ये था कि इफ द स्टेटमेंट्स अबव इफ ट्रू, इसका मतलब ये होता था कि स्टेटमेंट्स अबव यानी कि ऊपर हमें अगर डायरेक्ट हो रहा है, इफ द स्टेटमेंट्स अबव इफ ट्रू, इसका मतलब ये होता था कि जो ऊपर चीजें हैं वो नेसेसरीली फैक्ट्स हैं, राइट? या ओके, अब उसमें बेसिकली कोई भी कंक्लूजन नहीं था और वो सारे फैक्ट्स होते थे. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली ये है, यू जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे कोई कंक्लूजन था जो अभी हम लोगों ने रीड किया है सब कुछ, इसमें कंक्लूजन था कोई, और वो जो कंक्लूजन होता है उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट बन जाता है. उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उस आर्ग्यूमेंट को वीकन किया जा सकता है, और इसमें भी बेसिकली जो कंक्लूजन होता है उसको स्ट्रेंथन और वीकन किया जा सकता है. यू लेट मी नो कि यहाँ पे कोई कंक्लूजन था. बेशक जो ऑथर ऑफ दिस पैसेज है उसका कंक्लूजन ही क्यों ना, उसका ओपिनियन ही क्यों ना हो, बट यू जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे कोई ओपिनियन था. या Which one? जहाँ लिखा है therefore the mayor of the island. Yes, 100%. So this is something which is the conclusion. Okay, so this is the conclusion. This is the opinion of author. जो कि is basically इस या फिर ये basically ये क्या है, ये अगर मैं रखूं तो ये ज्यादा बेहतर है. This is the opinion of mayor. That mayor proposed. What you propose is your opinion. Okay, so this is the opinion of mayor. Okay. So because this is the opinion of mayor, this is the opinion. This whole thing is now an argument. और इस argument में जो बाकी सब कुछ था वो facts थे, और ये जो था ये opinion था. Making sense now? जो हम लोगों ने सारी चीजें जो अभी तक abstract में deal की थी, facts क्या होते हैं, opinions क्या होते हैं. So this is everything till here is a fact, and from here to here it is the opinion of mayor. Okay. So अगर मुझे बेसिकली क्या करना है, अगर मुझे इस आर्ग्यूमेंट को, दिस होल थिंग इज नाउ एन आर्ग्यूमेंट, अगर मुझे इस पूरे आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है तो मैं किस चीज को अटैक करूंगा? मैं किस चीज को अटैक करूंगा अगर मुझे उसको वीकन करना है, इस आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है, यानी कि if you want to weaken the fact कि मेयर ने शार्क्स को sharks को मारने के लिए कहा, then okay, look at it this way. Look at it this way. If what I wanted to say वो ये था कि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये facts हैं, और जो लास्ट सेंटेंस था वो ओपिनियन था, वो प्रपोजल था. वो प्रपोजल जो होते हैं वो बेसिकली ओपिनियंस होते हैं. ओके, तो ये पूरा जो था ये आर्ग्यूमेंट बन गया. सो दिस होल राइट अप इज एन आर्ग्यूमेंट. इस आर्ग्यूमेंट को अगर वीकन करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके जो ओपिनियन है इसको वीकन करना होता है, क्योंकि फैक्ट्स को तो मैं वीकन कर ही नहीं सकता. ओके ओके okay. अब इसको वीकन करने का ना बेसिकली एक तरीका क्या होता है कि मैं कोई एक ऐसा फैक्ट ले आऊं कि बेसिकली जिससे ये जो ओपिनियन था ये बेसिकली ये स्ट्रांगली ड्रॉ ना हो, ये वीकन हो जाए. इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और भी इसको डिटेल में देखते हैं. बट व्हाट आई वांटेड टू से कि यहाँ पे कैन यू सी, और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे कल, उसमें ये था कि उसमें होता था कि स्टेटमेंट्स अबव इफ ट्रू. इसमें इस तरह का कुछ नहीं है. हैव यू नोटिस दिस थिंग? इसमें ये नहीं क्या कि स्टेटमेंट्स अबव इफ ट्रू. इसमें बेसिकली ये इसमें क्योंकि जो अबव होता है, अगर हमारे पास ये आता है द स्टेटमेंट्स अबव इफ ट्रू, तो उसका मतलब होता है कि जो ऊपर थे वो मेरे पास फैक्ट्स थे. अब ऊपर फैक्ट्स नहीं है, ऊपर मेरे पास आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में बेसिकली एक चीज ट्रू होती है, यस फैक्ट्स ट्रू होते हैं, लेकिन ओपिनियन तो उसमें ट्रू नहीं होता 100%, राइट? यानी कि ओपिनियन जो होता है वो जस्ट एक ओपिनियन होता है, वो 100% अब इसमें बेसिकली क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू. अगर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो आंसर चॉइसेस हैं नीचे ए बी सी डी ई है, इफ दीज आर ट्रू, इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे हमारे पास गिवन है वो फैक्ट्स हैं कि ओपिनियंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू. नाउ द क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स थी वो ये थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू.
तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे जो फॉलोइंग जो है इफ दे आर ट्रू, यहाँ पे फिर ये फैक्ट्स होंगे। ऑफ कोर्स कोई भी स्टेटमेंट या फिर वो फैक्ट होती है या फिर वो ओपिनियन होती है। ओके, तो फिर ये फैक्ट होंगे कि ओपिनियन होंगे इफ दे Yeah, आर so ट्रू। I'm going to have to look for the option which is 100% true, right? Sorry, can you please repeat? Can you please repeat? Yeah. I'm going to have to look for the option which is 100% true, right? No, you have to. Okay, look at it this way. The thing is, the answer choices if they are true. Which of the following, if true, ये सारी आंसर चॉइसेस ट्रू हैं। मैंने बेसिकली क्या करना है कि अगर ये सारी आंसर चॉइसेस ट्रू ट्रू हैं, दैट इज अगर ये सारे फैक्ट्स हैं, मैंने कोई ऐसा फैक्ट लेके आना है, विच ऑफ कोई एक ऐसा लेके आना है जिसको मैं इस आर्ग्यूमेंट में जब प्लग करूं तो जो प्रपोजल है, जो कंक्लूजन है, वो वीकन हो जाए। नो जस्ट लेट दिस थिंग सिंक इन। ओके, कि अब मैंने एक ऐसा फैक्ट आंसर चॉइसेस से लेके आना है, और आंसर चॉइसेस यहाँ पे ई तक जाती हैं आपकी जीमेट में। सॉरी, डेटा सफिशिएंसी वहाँ पे 4 आंसर चॉइसेस होती हैं, यहाँ पे बेसिकली 5 आंसर चॉइसेस होंगी। Out of these 5 answer choices, I have to pick that fact which when I input into the argument becomes weakened. Read the question, और इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यही है कि नहीं है। Just read it and we will discuss it afterwards. Just read the question, और इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि नहीं है। Question padu. Which of the following, if true, most strongly calls into question the likelihood that implementation of the mayor's proposal will have the desired consequences? So basically इसका मतलब ये है कि which of the following if true, अब जो नीचे आंसर चॉइसेस हैं वो फैक्ट्स हैं। Most strongly calls into the question the likelihood that the implementation, now जो कि इस क्वेश्चन को वीकन कोई चीज कर रही हो, यानी कि इस सिचुएशन को वीकन कर रही हो। सिचुएशन क्या है कि likelihood that the implementation of mayor's proposal will have the desired consequence. What is the desired consequence of the The mayor's desired consequences, वही वाली बात, the desired consequence is to get rid of the sharks, right? No. थोड़ा सा देखें, अब इसको थोड़ा सा समझें कि what is the desired consequence of mayor's proposal. You just read the last sentence very closely. Now here comes the part when you have to read the things really closely. Okay, again इस argument में भी जो कि आपको close read करना है। अब what is the desired consequence? What is the desired consequence of this whole situation? You just read it closely and do let me know. There are means and there are end to the means. Okay, there's an end to the means. There are means and there's an end and Oh, there are like you're means to talking the about end. the broader picture. That's to नहीं, desired consequence तो अगर broader picture में देखा जाए, then that's to kill the sharks and boost the tourism to overall help the economy. No. Okay, so read the question. Which of the following, if true, यानी कि मैंने एक fact ऐसा plug करना है जो जिसकी वजह से most strongly calls into the question the likelihood that implementation of the mayor's proposal will have the desired consequence. So implementation of the mayor proposal जो था उसका desired consequence क्या था? जो desired आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है. So what I'm saying is कि जो मेयर का proposal था उसका desired consequence क्या था? What is the desired consequence of the mayor's proposal? What is the desired consequence of the mayor's proposal? You read the mayor proposal again, और mayor proposal का desired consequences क्या थे? Desired consequence या desired consequences? Technically, it should have been the desired consequence. This is a little problematic. यहाँ पे desired consequence word should have been desired consequence. In order to help the economy, therefore, the mayor of the island has proposed an ongoing program to kill any tiger sharks. Why are you killing the tiger sharks? Why? तो एक second. Can you hear me? Yeah, I can. Perfect. Go Okay. ahead. Yeah. Yeah. So isn't the desired consequence just for the to kill the sharks in order to boost tourism and overall help the economy? अच्छा, अब again, what is your last few words? Overall, मतलब जो end of the Yes. overall जो चाहिए वो economy को help करना है. That's what. Perfect. No, okay. So the desired consequence is to help the economy. Okay. So again, this is something which is a desired consequence. You are helping the economy. Okay. Making sense? Yeah, This is that's the fine. desired consequence. Okay. अब ये हो किस तरह है कि one thing leading to another
and this thing should lead to helping the economy. This is the desired consequence. Okay, अब उसके लिए जो कि बेसिकली अब सिचुएशन ये सिचुएशन थी कि यहाँ पे जो शार्क्स हैं, अगर उनको हम लोग मार देते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो इकोनॉमी है उसको हेल्प मिलेगा, राइट? Yes. अब लेकिन मैंने इस तरह का बेसिकली अब सिचुएशन लेके आनी है, दिस इज द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, दिस इज द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, मेकिंग सेंस? दिस इज अब थोड़ा सा देखें, जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस था ना वो कंक्लूजन में ये था कि यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी। अब मैं थोड़ा सा देखूं, ये बात देखूं कि हेल्पिंग द इकोनॉमी इज सेम एज हेल्पिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री, राइट? इफ यू हेल्प द टूरिज्म इंडस्ट्री यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी, राइट? Yeah. अगर मैं ये कहूं कि अब Yeah, it is as same as helping the economy because they've mentioned कि tourism industry उनकी second biggest है. second to which thing? That's their second biggest source of Yes. So revenue. what is the first biggest source as mentioned in the passage? As mentioned in the passage, it's wait, let this go. Sorry, the tourism is the biggest and fishing is the second. Read it again. You have to Yeah, read it. sorry, tourism is the second and fishing is the first. Yes. You have to close. Okay, so this is what I mean. कि you have to read the text very closely. So this is a little harder question. और जो हम लोगों ने rolling pins का देखा था वो भी थोड़ा सा hard question था. Okay. You have to read the text very closely. You have to read the text very closely. Okay. अब इसमें basically ये है कि अब basically अगर मैं text को read करता हूँ closely, तो basically tiger sharks are something which are bad for the tourism industry. लेकिन tourism industry जो है it is second to the fishing industry. Okay, so these are bad for tourism industry. और उसके बाद फिर हम लोगों का ये है कि they are two things which are the economy as of now. If मेरा जो last final goal था वो ये था कि in order to help the economy, so this thing has to be helped. Okay, economy has to be helped. Okay, in order to help the economy, therefore, the mayor of the island has proposed an ongoing program to kill any tiger sharks. Okay, so if no tiger sharks, the tourism industry will be good. Tourism industry will be good, then the economy will be good. It seems like this situation. Okay, so अब basically जो proposal था वो ये था, हम लोगों ने कोई एक ऐसी आंसर चॉइस को पिक करना है और वो फैक्ट होगी, यानी कि ये बाकी बात सच होगी, ये 100% सच बात होगी कि जिसकी वजह से मेयर के प्रपोजल का जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस था, which is to help the economy. This is very explicitly stated in order to help the economy. Okay, which of the following, if true, most strongly calls into the question the likelihood that implementation of mayor's proposal or mayor proposal will have the desired consequence. Mayor का proposal का desired consequence जो था वो helping the economy है. Okay, so desired consequence is helping the economy. So we जो हम लोगों का जो fixation है ना वो ये है कि we have to help the economy. This helping the economy is more important या फिर tourism industry is more important? अगर मैं ये करूं कि अगर हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री को ही सिर्फ बचाते रहें, अगर ये वाली सिचुएशन हो और जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ओवरऑल जो है इकोनॉमी उससे मैटर कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाना मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जो अल्टीमेट गोल है व्हाट आई वांट टू से इज हेल्पिंग द इकोनॉमी. What I want to say Yeah, that, yeah. okay, That's the this is ultimate. the thing. That's like the This final is yes. thing. This is something which is called you have to read the text very closely. You have to read the text very closely. You have to read the text very closely. अब उसके बाद उस सिचुएशन को समझना होता है और फिर एक वक्त आते ही चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं. ये थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था ये, लेकिन हम लोग अगर ट्रिकी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं तो फिर हम लोग जो इजी क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. So what I want to say is you read the question and you read the passage. You understand the passage के passage में क्या-क्या information given थी and you read the question as well. You have to read the question very carefully. उस question ने मुझे ये बताया था कि which of the following if true most strongly calls into the question the likelihood that implementation of the mayor's proposal will have the desired consequence. Okay, so you pick the answer choices और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे. Okay, so just give me a second. मैं text को थोड़ा सा छोटा Yeah, करें. sure.
Okay, so go read the answer choices, and if you want to read the prompt, you just let me know. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, okay? But you just go and read the answer choices, and you first read the question very carefully, और उसके बाद you just go to the answer choices now. Okay, just a second. No problem, no problem. Take your time. Yeah, okay, I'll just read it now. So what is your pick? What is your pick? G. What is your answer? What is your pick? The answer choices. Which one is your pick? Oh no, I just started reading it. Screen it just कर रही थी. Okay, okay. A. अच्छा, A में basically क्या है कि even if not all the tiger sharks that come close to the beaches are killed, the existence of the program would reassure to. Okay, have you gone through all the answer choices? Yeah, I just went through them. Okay, you just okay. What about what is the reason C is not right? उसमें लिखा है island features a number of other tourist attractions that external information not mentioned in the passage. अच्छा, नो, अब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्रिटिकल रीजनिंग के, जो वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें यू कैन ब्रिंग इन द आउटसाइड इंफॉर्मेशन. दे वर्क लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम द इन्फ्रेंसेस. इन्फ्रेंसेस जो होते हैं, अब बेसिकली ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं. इन्फ्रेंस जो होती है ना, वो बेसिकली क्लोज रूम. I mean, we can like extend the passage तो नहीं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं. Like this mentioned, there are other tourist spots, but the question is relating to a consequence, and this is not a consequence. No, the question is discussing about कि which of the following if more strongly calls the question is the likelihood of the implementation. जो implementation अगर हम लोग करते हैं proposal, वो ये है कि जो ongoing प्रोग्राम है टाइगर शार्क्स की किलिंग का, वो चलता रहेगा. उससे जो है विल हैव द, और कि उससे ना बेसिकली जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा, और जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने का था. ओके, यू लुक एट इट दिस वे. जो डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल था वो ये था कि जो इकोनॉमी है वो हेल्प हो जाए. ओके, सो हमें कोई ऐसा सा चॉइस लेके आनी है जो कि बेसिकली ये सिचुएशन पता क्या होती है, इसको इस तरह विजुअलाइज कि देयर इज अ कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन, देयर इज अ बोर्ड मीटिंग गोइंग ऑन. ओके, उसमें खड़ा होके जो प्रपोजल दी है मेयर ने, अब कोई बंदा अंदर आता है, उस दिस इज नॉट, दिस जो इन्फ्रेंसेस होती है ना, वो बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती, लेकिन इसमें बाहर से इंफॉर्मेशन आ सकती है. यानी कि एक बंदा अंदर एंटर हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस रूम में, और वो अगर अंदर एंटर होके कोई एक इस तरह का फैक्ट लेके आए, कोई इस तरह की बात करे जिससे जो कि जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस था, वो बेसिकली उसका जो लाइक्लीहुड है वो क्वेश्चन हो जाए. क्या ये जो कि इस केस में ये था कि हेल्पिंग द इकोनॉमी, ये जो बेसिकली डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस है ये क्वेश्चन हो जाए. कोई बंदा रूम में एंटर हुआ और उसने ये बेसिकली बात जो है ये वो यही उसने बात की. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से कि बाहर की इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस में आ सकती है 100%. यू कैन हैव द आउटसाइड इंफॉर्मेशन इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन हैव द आउटसाइड इंफॉर्मेशन. Okay, so we can have them in these type of Yes, we can questions. have. We can have. यानी कि ये बेसिकली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग की, के बाहर से बंदा आ सकता है. लेकिन जो कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती हैं जहाँ पे बाहर की आप इंफॉर्मेशन नहीं लेके आ सकती. वो क्लोज रूम कॉन्फ्रेंसेस हैं. वहाँ पे इनफैक्ट यू कैन नॉट ब्रिंग इन द आउटसाइड इंफॉर्मेशन. ओके, बेसिकली आपके बिजनेस जो सिचुएशंस होती हैं अल्टीमेटली उनको स्ट्रेंथन करी होती हैं. वहाँ पे इस तरह की बोथ द मीटिंग्स होती हैं व्हेन यू कैन नॉट ब्रिंग इन द आउटसाइड इंफॉर्मेशन. Yeah, but in the question, the primary focus was restoring the economy.
तो उसके रिलेशन में ये ऑप्शन सी सही नहीं है because it talks about other factors. यस ओके इससे बेसिकली जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस है उसका वो ये था कि जो इकोनॉमी है अगर मैं कोई बंदा अगर एंटर होता है ये वाली इंफॉर्मेशन देता है इससे जो मेरी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी मेरी से इस वाले स्ट्रेंथ यानी कि इससे बेसिकली जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमी को हेल्प करने का ओके you guys you understand it already you I think I'm probably not able to explain it in a better way but you understand it anyway. अब आंसर चॉइस व्हाट अबाउट आंसर चॉइस ई अगर कोई बंदा एंटर होता है वो ये कहता है कि नॉट ऑल टूरिस्ट हु कम टू टेनेरा आइलैंड एंजॉय स्विमिंग और सर्फिंग ओके सो दिस थिंग इज अगेन रिलेटेड इसका अगेन कैन यू सी दिस कैन यू लेट मी नो कि इसका रीजन क्या है इस आंसर चॉइस की This answer choice also ends up negating tourism as a factor for the economy boost. अच्छा अब बेसिकली व्हाट आई रियली डिस्कस्ड एट लंच जब हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें ये था कि यू हैव टू रीड द टेक्स्ट वेरी क्लोजली अब सिमिलरली यू हैव टू रीड द आंसर चॉइसेस वेरी क्लोजली एज वेल यू हैव टू रीड द आंसर चॉइसेस वेरी क्लोजली व्हाट अबाउट डी वो तो फिशरीज के बारे में बात कर रहा है एंड ओवर हियर हमारा जो अल्टीमेट गोल और प्रपोजल जिसके लिए द मेयर ने डाला है दैट्स इन रिलेशन टू टूरिज्म. अच्छा अब थोड़ा सा इसको देखें जो हमारा ओवरऑल गोल था ना वो बेसिकली आई मीन ये जो दिस ओवर अगर इसको ब्रॉडर विजन में देखा जाए देन या द फिशेस की कमी होना इज विल आल्सो प्रोबब्ली अफेक्ट द फिशिंग इंडस्ट्री. Okay, I don't know, but you just let me know the answer. वो जो हमारा broader goal था वो क्या था और हम लोगों ने in fact broader goal को ही करना है. So this is a difficult question. This is a relatively थोड़ा सा difficult question है, but this is how the things operate. हमारा goal क्या था और फिर उसका D से relationship क्या है? You just let me know. So Javeria, just do let me know okay what is the situation और D जो है फिर वो क्यों आंसर चॉइस नहीं करेक्ट अगर नहीं है तो अगर वो करेक्ट है तो फिर क्यों है you just let me know just read D very carefully and read the passage if you want to read और उसमें भी conclusion का जो था जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो अगर हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं प्रपोजल मेयर का हेलो या can you hear me हेलो I can hear you, but I don't think you can hear me. I can hear you. hello I can hear you. You cannot hear me? yeah I'm so sorry I got a call. No, it's okay. So जी मैं ए के साथ ही रहूंगी ऑप्शन ए के साथ. why not D? Why not D? Okay, wait, let me read the question again. It says, which of the following, if true, most strongly calls into question the likelihood that implementation of the mayor's proposal will have desired consequences? Calls into question the likelihood that the implementation of the mayor's... You want me to go to the okay, passage? so... No. Yeah, question की बात है. मैंने I think question को misinterpret किया है. They're talking about a factor that will economy के जो goal achieve करने की वजह से जो एक barrier बन सकता है. Yes, you have to help the economy. Okay. So मैं कोई एक Yeah, बंदा no, just a second. ये जो part है most strongly calls into question. This means that क्या रोक रहा है ना? Yes, इसका मतलब है कि weakening the argument. Broadly speaking, इसका मतलब ये है. Okay, yeah, that is what we were discussing about weakening the argument. Okay. Yes, I'm so sorry. I wasn't able to connect that properly. In that
case, A is not the answer. A would be for a positive impact. So in that case, the answer would be God. Yeah. In that case, the answer would be not all tourists. It's going to be between D and E, and it's going to be D if we keep the focus on the economy. अच्छा, इकोनॉमी के जो जहाँ पे हमें कंपोनेंट्स गिवन थे वो क्या थे? एक टूरिज्म था और एक fishing tea. Like that's what they spoke about very prominently. Okay, so which of the following, if true more strongly, okay, so the which is more important, fishing or tourism? If you have to help the economy, Fishing. you can help one of them, because the answer choice A somehow talks about the tourism industry, right? The answer choice B talks about the tourism industry. The answer choice C talks about the tourism industry. Answer choice D talks about the fishing industry. Okay, यहाँ पे ये fishing industry थी. And the answer choice E talks about tourism industry. Okay, tourism industry. So if you have to help the economy, and you have to select one of the two. Which one should you select? Because in the 4 answer choices you are helping the tourism industry, and one of the answer choice, one of the 5 answer choices, यहाँ पे 4 of the 5 answer choices, okay, 4 of the 5 जो हैं वो tourism industry को help कर रही हैं, 1 out of 5 जो है वो fishing industry को help कर रही है, और जो fishing industry और tourism industry है वो economy को basically help करती हैं. So which if I have to go with the one, for which should I go? अगर मुझे फिशिंग इंडस्ट्री को बचाना है या मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाना है. अगर मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाना है तो फिर मैं आंसर चॉइस ए, बी, सी और ई पे जाऊंगा. लेकिन अगर मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर मुझे फिशिंग इंडस्ट्री को बचाना है जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री से पहले आती है, और अल्टीमेटली मुझे इकोनॉमी को बचाना है, इकोनॉमी पे मतलब ओवरऑल ग्रेटर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी देखेंगे ना, बिकॉज़ Yes, both the industries play a major it role. is a desired consequence. उसमें ये लिखा हुआ था कि in order to help the economy, you are helping the economy. Economy is made up of two things which was mentioned in the passage as a whole as well. Passage में भी था कि fishing industry है और उसके बाद tourism industry है. Four answer choices deal with the tourism industry. One answer choice deals with the fishing industry. Which one should you select? Which one should you select? और इनफैक्ट जो ये वाली भी 4 टूरिज्म इंडस्ट्री थी उनमें भी देखें कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो फिशिंग इंडस्ट्री वाली आंसर चॉइस है जो कि डी आंसर चॉइस है उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. डी आंसर चॉइस का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है because it's affecting the fisheries industry, which is the major component of the economy. Yeah, so this is the correct answer. This is the correct answer. Okay, so what you have to do, this was a difficult question. What you have to do now, you have to after the session you have to read this question उसको पूरा closely, और फिर you have to figure out कि basically correct answers correct क्यों होते हैं और incorrect जो होते हैं वो incorrect क्यों होते हैं, because this is an official. नहीं, I think the question is okay. इसके जो उन्होंने फ्रेम जिस तरह वर्डिंग की हुई है ना क्वेश्चन की, वो बस थोड़ी कंफ्यूजिंग है. Yes, so फिर इसी के लिए you have to read very closely. You see, just from today's session and from the yesterday's session, somehow you figure out कि यार किस तरह closely read करना होता है. Closely reading is a very important skill on the GMAT, tested on reading comprehension as well for the smaller picture questions. For the smaller picture questions, each and everything is very important. Somehow ये आपकी जो reading comprehension के smaller picture questions हैं उनको बहुत strengthen कर रहे होते हैं. Okay. और ये आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ्स की, उसको भी ये स्किल बहुत बेसिकली कर रही होती है, बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रही होती है. So you understand each and everything related with this passage, or you want to discuss something? Oh no, I totally get it. वो तो बस the minute I read the question properly, I got it.
परफेक्ट. अब सिचुएशन ये थी कि ये फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चन था. ओके, सो वी विल लुक इनटू you want to end the session or you want to continue a bit more? You can continue, it's fine. ठीक है. अब सिचुएशन ये है कि वी आर गोइंग टू सी द अदर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है. it is in fact it is the easier one. Okay, so you just go through this question. It is थोड़ा सा easy है. Okay. Uh, You can view my screen. ये text ठीक है, readable है ये. If it is okay, so इसमें basically ये ही कि यहाँ पे this is the question जो मुझे somehow read करना होता है सबसे पहले. Which one of the following if true? Okay, if the following if true, तो इसका मतलब है कि जो नीचे हैं वो सारे facts हैं. इसका मतलब ये है कि ऊपर जो है अगर argument है तो ऊपर definitely एक conclusion होगा और opinion से drive हुआ होगा conclusion. The conclusion is derived from the opinion. Okay, और ऊपर मेरे पास अगर एक आर्ग्यूमेंट है तो उस आर्ग्यूमेंट को वीकन किया जा सकता है, उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है. अब अगेन द सेम सिचुएशन जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में की थी, बट दिस इज अ फेयरली लेस इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस. जस्ट गो अहेड एंड रीड द क्वेश्चन, जो कि ये था कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग if true most seriously weakens the argument above. Very simple, in the simplest form question is presented. ऊपर argument है, read the argument very closely and then select the answer choice. उसको फिर हम लोग discuss करते हैं. This is somehow the easy question. This is the easy question. okay. Should I read the answer choices right now? Yes, you just read the answer choices also, और फिर pick your correct answer. उसको थोड़ा सा discuss करते हैं फिर. Okay, sure. A. Yes, yes, ये थोड़ा सा easy question था. Definitely ये easy question था, but you already understand कि ये किस तरह चीजें operate करती हैं, right? Yeah, it's all good. Okay, so just now give this one a shot. Wait, do I have to read this? Yes, yes. Again, the same thing. You read the question first. You read the question first, और उसके बाद you read the text, और उसके बाद you just pick the correct answer. Okay, okay. Economy around Lake Paka depends on fishing. Recent years, scarcity of food for salmon has caused a decline both in the size of adult salmon in the lake. Consumption influence significantly. To remedy this solution, officials introduced shrimp, which can serve as a food source for the adult salmon. Salmon is not a popular food.
D. Okay, so your pick is the primary for perfect. Perfect D. Okay. So वहाँ पे इनफैक्ट जो अगर हम लोग जाते हैं ना टू रेमेडी दिस सिचुएशन जो कि ऐसे था उसमें ऑफिशियल्स प्लान टू इंट्रोड्यूस श्रिम्प्स व्हिच कैन सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर एडल्ट सामन. नो इट इज द फूड फॉर द एडल्ट सामन बट जो जुवेनाइल सामन है उसको वो जो है वो उसका जो प्राइमरी फूड है वो तो कुछ और है वो प्लैंकटन है. तो फिर प्लैंकटन अगर जुवेनाइल फूड जो जुवेनाइल सामन है उसको अगर प्लैंकटन नहीं मिल रहा तो फिर वो एडल्ट सामन नहीं बन सकती. और फिर जो है you get my point right. Yeah, I get it. So this is how the weakening operates. Okay, this is how the weakening operates. Go to the next question. आपकी आवाज पिछले It's लास्ट okay. सेंटेंस सुनाई नहीं दिया. Okay. So you have to go to this question now. Okay. Okay, you just read the prompt. उसके बाद मैं जो questions हैं उनको show कर दूंगा. Okay. I read the question. Options देखना. Okay, getting too small. Yeah. E. Perfect. So I'm noticing that in GMAT, the pattern of the questions, it's a lot of them are like finance related.
economy related. Yes. Your finance, it is in fact the most important theme of GMAT. GMAT verbal का critical reasoning and reading comprehension maybe in both of these for both of these. Because I saw some questions with you, of course, and then I saw some myself, and I obviously read the whole question. मैं पूरी process करती हूँ elimination and हर चीज की, लेकिन उसको करे बगैर भी कभी कभार मुझे पता होता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है. Yes, Because मैंने definitely. This is a हजार good बार पढ़ा situation. हुआ होता है जिंदगी में, तो वो मेरे Yes. दिमाग This में is going fix to be, होता है. yes, 100%. This is going to be of a lot of benefit to you. जो कि इकोनॉमी का थीम है, जो फाइनेंस का थीम है, if you are comfortable with this theme as a whole, the test is going to be verbal का critical reasoning and reading comprehension के questions, they are going to be really easy for you. This is true. Yeah, because मैंने ये देखा कि इन्होंने फाइनेंस पे कम फोकस रखा हुआ है, लेकिन ये लोग जैसे रेवेन्यू, ओवरऑल प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी, एंड that's highly integrated into accounting. Yes, so we have the questions जो कि अगर हम लोग मैथ्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी questions हैं which are related with percentages, compound Percentages and interest, ratios, percentages, compound interest. They are, in fact, they are the most important questions of GMAT. For the GMAT, they are the most important questions. So okay, I didn't know this. लेकिन जो मेरा मतलब क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन है उसमें दिस स्टफ इज लाइक हमारे एबीसी है ये चीजें, तो perfect. This is I was very shocked to see this. Yeah, this is going to be of help. This is going to be of help. Necessarily. Just give me a second. So just go ahead, read the question, then read the passage and Okay. Question थोड़ा आप screen. Okay, wait, man, it's fine. I brought it. B. E. It's B. which one? B for bat. Many was reported about secretaries than you says more. So which one? B. B for bat, right? Yeah. Yeah, perfect. ठीक है. So you need the discussion on this one or not? Shall we move forward? अच्छा, अब basically this एक is, सेकंड, आप yeah, Jam, please go आपकी ahead. आवाज जो है पिछले सेंटेंस में कट गई. Could you please repeat? अच्छा, I was saying कि you want to have the discussion on that one या फिर नहीं, या फिर it's perfectly fine to नहीं, go आप ahead. रिपीट कर दे वो. मैं ये पूछ रहा था कि आपने डिस्कशन करनी है उसमें कि नहीं, ठीक है, डिस्कशन की नहीं, जरूरत I'm good. जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे कह दूंगी. perfect. So yeah, that's it. अभी I think इसको हम लोग अगर recap कर लेते हैं और जो भी आपने basically करना है, okay? So what you Okay. have to do right now, right after the session, okay? You just have to WhatsApp me after doing this thing. I'm giving you the homework right away, okay? So for the next 2 hours, you have to do this thing. Okay? You have to go to this ये website. जो वर्कशीट है. You have to go to this website. Sorry.
Okay, website. Sorry, Yeah. मुझे लगा आप worksheet दे रहे थे नहीं कोई. नहीं Yeah, okay. ओके ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके इसमें मैं बस जो अब है लिंक भेज दूंगा. मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपने यहाँ पे जाना है जीमैट विद सीजे जो वेबसाइट है, उसमें Okay. यू हैव टू गो टू द क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट 400 यूनिक ऑफिशियल वर्बल क्वेश्चंस। ओके डिटेल All सॉल्यूशंस right. ऑफिशियल सीआर क्वेश्चंस। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, अगर हम लोग यहाँ पे गए Yeah, तो sure. आपने यहाँ पे आना है वीकेंड क्वेश्चंस पे। ओके तो जो अभी हम लोग Right. गए थे ये वीकेंड क्वेश्चंस थे। वीकेंड क्वेश्चंस नो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हम लोग आई थिंक आप बस बता दें मुझे क्या करना है, लिंक भेज दें. ओके यस, आपने बेसिकली यहाँ पे जाना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जाके ना, आप जब नीचे जाएंगी तो आपने जाना है ऑफिशियल Right. गाइड क्वेश्चंस, ओजी क्वेश्चंस जिनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। सो दिस वाज क्रिटिकल रीजनिंग ऑफिशियल गाइड क्वेश्चंस। यहाँ पे क्लिक करना Okay. है और उसके बाद ना आपके पास इस तरह का टेबल आ जाएगा। ओके सो जो ये वाला टेबल था, इसमें आपने यू हैव टू डू समथिंग जो कि वीकेंड के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपने लिखना है वीकेंड। Okay. व्हेन यू राइट वीकेंड तो फिर वीकेंड के क्वेश्चंस आ जाते काफी हैं। सारे आ रहे हैं. या सो ये इनफैक्ट दीज आर ऑल द ऑफिशियल क्वेश्चंस। हम लोगों ने ऑफिशियल क्वेश्चन से ही करने होते हैं, हमने थर्ड पार्टी नहीं करना होता। ओके सो इन लिंक पे क्लिक करेंगे जी, आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएंगे जो कि जीमेट क्लब की वेबसाइट है, जहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे कल भी। ओके तो फिर इन क्वेश्चंस में जाके ना यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर और इन सारे क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपने करना है तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 आवर यू हैव टू सॉल्व द 50 क्वेश्चंस। सो दिस इज द टास्क। सो यू जस्ट टेक 5 मिनट्स की ब्रेक, उसके बाद यू जस्ट सॉल्व 50 क्वेश्चंस यहाँ से, वीकेंड के क्वेश्चंस। ओके वो सारे वीकेंड के क्वेश्चंस इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि क्या एक्यूरेसी थी, कितने परसेंट ठीक थे और कौन से गलत थे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 1 आवर। ओके सो जस्ट 5 You मिनट्स have to do this right now. yeah, you have to do right now. You just take 5 to 10 minutes की break, उसके बाद you just fresh up, और 10 minutes की break के बाद you just please start and you do let me know कि जो 50 questions अगर आप करती हैं तो उसमें accuracy क्या है आपकी in 1 hour। Okay, आप मुझे लिंक भेज दें. मैं आपको अपना लिंक अभी Can I सेंड do करूँ। this between 2 and 3? Okay, just do it between 2 and 3, but you Yeah. just have to assure me that you have done this thing and No, you I'll do it between 2 and 3 because अभी लाइट नहीं है, मेरे घर का वाईफाई नहीं है, तो वो 2 o'clock पे आ जाएगा and it'll be faster for me. perfect just you have to do them and you have to let me know your performance. You have to let Yeah, me know sure. your performance। आप Okay, मुझे लिंक भेज दें. I'll try कि अगर अभी से ही खुल रहे हैं हो रहा है, I'll do it right now. No issue. perfect मैं आपको भी लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है so anything that you Right. want to talk about today's session, anything that you want to say about today's session, anything you want No, to it's ask। perfectly fine. And क्योंकि मैंने अब lectures download कर लिए हैं, पहले तो मैंने कर लिए for the RC sessions, तो I'll be finishing them up today for sure. तो फिर कल क्या होगा? Kyle, basically if you can solve these questions, I think that we are doing well on critical reasoning, so we can start with Sohaib from the next week। Okay, फिर हम लोग सोहेब के साथ जो नेक्स्ट वीक है उससे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी और क्रिटिकल रीजनिंग कल देख लेंगे। Okay. ठीक है सही है. so tomorrow we are going to do more critical reasoning with me, and we will be with Sohaib from Monday onwards। Okay, fine. That's fine. perfect inshallah फिर see you tomorrow at the same time 10 p.m. inshallah taala। Just letting you know, Friday को I think it's a bit difficult for a morning class. ठीक है, we Because can have the class in the evening। Okay. yeah, मैं आपको inform कर दूंगी because I believe मैंने mention किया था कि I had a relative who passed away. हाँ yes you did। Yeah, and we were all not all of us, but some of us caught the virus, and I did too. अच्छा तो मेरी जो है अभी मतलब 15 day चल रहा है, so अच्छा I good might have to go for my testing. Yeah. perfect ठीक है definitely so yeah inshallah फिर Friday को we can have the class in the evening, but tomorrow we are going to have the class at 10 a.m. inshallah taala। Yeah, that's fine. मैं आपको Friday को beforehand बता दूंगी जब भी मुझे वो लोग time देंगे. perfect okay inshallah you just do this homework and do let me know your performance।
ओके या ओके, मुझे लिंक भेज ओके, दो। बस मैं आपको भेज रहा ओके, हूँ। ओके, टेक केयर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह थैंक हाफिज़, यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।